let us make a big round of applause for each one of you who has joined in, because there were a lot of people in the group, but only some of you have shown up. So I want you to take your left hand forward and now put it on your shoulders and pat yourself back and say this to yourself that I am amazing. I am amazing. Everybody say this to yourself. I am amazing. Thank you so much. Because when you say this affirmation to yourself, you put this, thought in your mind that you are amazing and you're already confident. Congratulations. This is the first exercise that we did before even beginning the session. Okay. So I'll quickly take you to the presentation. Just give me a second. I will share my screen now. All right. Everybody can hear me? See me clearly? Perfect. Just give me a second. Come on, everyone. Okay, where is? Yeah. Everybody is able to see the screen? Let me just put it present. All right. So today we are actually going to understand how we can master camera confidence and unlock your potential with powerful techniques, right? So how many of you are excited? Type E in the chat box. Voice nahi aa rahi. Okay, let me just check. Voice now. Is it audible? Is it audible? Am I audible? Yes or no? Okay, perfect. Thank you so much. Thank you so much. So today's agenda, as you know, I have already shared. So let me ask you a question. How many of you want to create your personal brand? Type I in the chat box. Let me read. Type I in the chat box. Okay, everybody is saying Akshay, we have GV, Lakshmi Narayan, Gopal, Manoj. Everybody is saying that you want to create your own personal brand. Great. And how many of you want to conduct workshops? How many of you want to conduct webinars, just like I am doing a workshop? How many of you want to create and launch your own courses, just like Raj is conducting so many workshops and he's doing so much for the community, just like I'm doing, just like many other people are doing? How many of you really, really want to become more confident when it comes to speaking in front of the camera and want to build that authenticity and authority? Yeah. Okay. One very important question. How many of you want to create video-based content? Type I in the chat box. Sunita, Naresh. Okay. How many of you want to create video-based content? Type I in the chat box. Okay. Manoj, Kamlesh, everybody is writing. Rachna. So each one of you want to create video-based content, right? And how many of you want to become a TEDx speaker? A person who is invited to, speak in front of the public, or maybe known as a keynote speaker. But TEDx speaker is somebody which, that person is seen with a lot of respect and authority as well. And TEDx speaker, by the way, it creates a very strong brand, personal brand, right? All right. So everybody wants to sort of, yes, you want to
create your personal brand, you want to do webinars, you want to do TEDx talks, you want to conduct workshops, launch your courses, and want to do video-based content. So before we begin, before we dive deep into the session, can I share a little bit about myself? Do I have your permission? Type P in the chat box. Thank you, thank you, thank you. So some of you have already seen me. I was there at Raj's event. We are working in the team together. And my journey has been quite interesting. I was a very shy and underconfident person. In fact, I used to be a person who used to, turn off the videos and never used to show up because I used to feel what the other person is going to think about me. I was not very comfortable when it comes to Zoom meeting and, showing, myself in front of the camera. However, I'll dive, I'll take you towards my journey when I started my career in theater, performing on stage and working as an actor, right? So that has been my journey. I spent almost 5 to 6 years in Mumbai, experiencing how the acting industry works, what goes behind the camera, what are the challenges when it comes to, speaking in front of the camera or learning your dialogues or whatever it is, right? But then my life had a complete different plan, right? It had complete different plan. I had no idea, I was literally not thinking that I would get into, the space where I could help somebody become more confident. I could help somebody overcome stress and anxiety. So my journey from being a shy and underconfident to a confident person has been quite interesting. This is all about me. I am a life empowerment coach. I founded this company called Mind Tarang. I'm the author of the book, The Ultimate Confidence Roadmap and Grail 2.0. I'm a two-time TEDx speaker. I have been actor, voiceover artist. So when it comes to acting, so I did a show called Collector Bahu as the main lead, and it was on DD National. And we did almost around 130 episodes. And I've also worked in several Sony television shows, and I've done some of the ads with Reliance, and I've also written certain scripts. So that was my background. And then life had a different plan. I came back from Mumbai and got into the space of transformation, got into coaching, and started creating my own programs and videos, and had this opportunity to be a TEDx speaker. So how many of you love this, and how many of you feel inspired that if we are going to listen to this person who is sitting in front of you, definitely there is going to be some kind of change, definitely is going to be a learning session? Type yes in the chat box. Everybody, type yes in the chat box. Or give me a high five. Everyone, please turn on your videos and give me a high five. Awesome. I love the energy from each one of you. Smita, I can see Smita, Gopal, Sudarshan, everybody, Lakshmi Narayan. Thank you so much. Thank you so much. So in today's session, let me, tell you something. By the end of the session, you are going to get a beautiful gift. How many of you love gifts? Type G in the chat box. You will be getting gifts. You will also learn 3 AI tools that will help you to create content fast. कितने लोगों को content fast create करना है? उनको, जो लोग last तक रहेंगे, उनके लिए वो मिलेगा. ठीक है? So please make sure that you are here till the end. Thank you. So in today's session, we are going to understand what are the challenges when it comes to creating videos. What are the pain points when it comes to, if you are a coach, consultant, how many of you are coaches? Just raise your hands. I just want to see the video. How many of you are coaches? How many of you are trainers, entrepreneurs, business owners, having marketing agency, etc., etc.? How many of you are working professionals? Fantastic. Great. All right. So I'm going to talk about how you are going to, sort of overcome the camera anxiety when it happens in front of you. Like when all of a sudden, everything is going fine. But the moment you see camera, or the moment you see that, okay, fine, I have to make a video, there's an anxiety that happens. How many of you feel that? Type me in the chat box. Take a deep breath, everyone.
Take a deep breath and exhale. First and foremost thing is, whenever there is any kind of anxiety, you need to calm down. That is the first thing that you need to do, because your mind gets into a fight or flight mode. I'm also going to bring the element of rewiring your subconscious mind, since I'm a life coach also, right? So there will be a lot of exercises, a lot of fun things that we'll be doing together. So one more thing before we begin, do you have your phones with you? Because we are going to do an activity also in the middle. Everybody has phone. The phone is charged. Type yes in the chat box. Fantastic. Okay, great. So I'll be sharing whenever the activity is done. We will be doing together. Okay, perfect. Now, great. So this is all about me, but let me ask you one question. Are you feeling this? जो चीज आप ये feel कर रहे हो, whatever I'm going to ask, type yes in the chat box. Are you feeling this? I feel nervous and anxious every time when I think about speaking on camera. Type yes in the chat box. Okay, Lakshmi Narayan, Ashok, Priya, Shipra says yes. Okay, Tapas, all right. How many of you feel anxious and nervous whenever you have to speak in front of the camera? Sometimes. Okay, Kamlesh. All right. How many of you feel that you are a perfectionist and can pinpoint a mistake over here? What is a mistake over here? Type that mistake in the chat box. What is a mistake over here? Okay. F is capital spelling mistake. All right. Spelling. What else? What else is the mistake? So you can see this, the word perfectionist, right? Perfectionist ka jo F hai center mein, that is capital and it has to be small, correct? And without me, it is written B, and perfection again, it is incorrect spelling. And how many of you tend to think about that perfect moment, that perfect camera angle, that perfect light before even thinking about कि मुझे कौन सा video बनाना है? How many of you keep thinking, no, I need to have a perfect background. When I have to record, it has to be perfect. I need to be confident. अरे जब कोई पहली बार कैमरा के सामने आता है वो कॉन्फिडेंट नहीं होता है, वो परफेक्ट नहीं होता है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. स्टॉप pinpointing the mistakes. Stop getting into perfectionism, because it leads to overthinking and procrastination. How many of you agree with me? The more we get into perfect syndrome, perfection होता है ना कि जब तक वो perfect नहीं हो तब तक हम delay करते जाते हैं. तो आपका क्या हो रहा है कि आपकी विजिबिलिटी नहीं बन रही, आपकी ब्रांडिंग नहीं हो रही, क्योंकि आपको लग रहा है कि जब तक वो परफेक्ट नहीं होगा तब तक तो कुछ नहीं हो सकता. Are you able to relate? Type R in the chat box, everyone. Okay, a lot of you are writing R in the chat box. Great. Now, most of us are into this perfectionism sort of a thing. Next is, how many of you struggle to come across as natural and confident in front of the camera? कितने लोगों को दिक्कत होती है when it is supposed to be, you have to be natural and confident, तो आपके अंदर थोड़ी सी झिझक आती है, आप थोड़े से अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हो, आपको थोड़ा सा लगता है कि पता नहीं लोग मेरे बारे में कैसा सोचेंगे. टाइप मी इन द चैट बॉक्स. आई कैन सी लॉट ऑफ मी इन द चैट बॉक्स. यस, मी. ओके, right, lot of you are typing me in the chat box. Now, how many of you feel that I am worried about being judged or criticized for how I look or sound in videos? मतलब मेरा look कैसा आ रहा है, लोग मुझे judge तो नहीं कर रहे हैं. Type me in the chat box. Lakshmi Narayan, Shreyas, keep coming. Ashok, okay. How many of you? Shipra, all right. Lot of you are typing me in the chat box. Because see, first and foremost thing is we need to understand what are the challenges that we are going through. And we are going to work on 3 specific challenges today. Okay? So stay. Now, let me ask you a question. How many of you feel that no matter how much I practice, मैं कितना भी practice कर लूं, when it comes to, making a video, I mess up. I can't shake the fear of messing up. मतलब मुझे लगता है कि whenever I'm making video, what if I make this mistake?
you tend to feel that your message is getting lost because you can't express yourself confidently on camera. मतलब आपके दिमाग में सारे पॉइंट्स हैं, थॉट्स हैं, बट जब आपको रिकॉर्ड करना होता है, एवरीथिंग इज लाइक अ बिजार. समटाइम्स यू गो ब्लैंक. Type B in the chat box if you're able to relate with me. Type B in the chat box. Shreyas, Shipra, okay. How many of you are able to? Okay, Kamlesh, Sivaram, okay. All right, all right. And how many of you, look at this cat, okay? This cat looks like really crazy. How many of you get stuck overthinking every single thing before you hit the record? मतलब आप बहुत ज़्यादा चीजें सोचने लगते हो, you feel like paralyzed, you feel like, okay, let me take 100 takes and after that only I'm going to post my video, and you know, all of those thoughts keep coming. Type me in the chat box. How many of you feel that I know video content is important? You know that video content is important. बिना video content के काम नहीं चलेगा. But still, you tend to avoid because you feel uncomfortable on screen. Type I in the chat box. Type I in the chat box. Okay, Kamlesh, Shreyas, Lakshmi Narayan, Ashok. How many of you feel the same thing when it comes to being on the screen? How many of you feel that I do not know how to appear professional and polished without sounding robotic? How many of you feel that your success depends on video content, but I don't feel capable of delivering what's needed? आपको पता है कि आपका जो सक्सेस है आपके वीडियो कंटेंट में आपका मैटर करता है. इनफैक्ट आज की डेट में LinkedIn has also got reels. How many of you are aware of that? Right? You can make some posts also, but you have this possibility of creating videos on LinkedIn. ठीक है, सो आपको ये चीज पता है, बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यू डोंट फील केपेबल ऑफ डिलीवरिंग व्हाट इज नीडेड बिकॉज एक अंडर कॉन्फिडेंस है. ठीक है, सो दीज आर ऑल द चैलेंजेस दैट यू आर गोइंग थ्रू. करेक्ट. नाउ one thing, one very, very important learning from this whole incident. How many of you have seen Three Idiots and know what I'm going to talk about? Do you know this incident that happened in this film? Can anybody tell me? आप सब लोगों ने Three Idiots देखी है? So what happens is Amir Khan tells his teacher that, you know what, आपको ये नहीं आता कि पढ़ाना कैसे है. Correct? So what he does is he writes two names on the blackboard. ठीक है? He writes two names on the blackboard and he asks what is the meaning of it. Now everybody is searching the meaning of the words which are there on the, you know, on the blackboard in their books. सब लोग वो बुक्स में ढूंढ रहे हैं कि उसका मीनिंग क्या है. 30 seconds के बाद it's like time up and nobody knows. Why nobody knows? Why nobody knows? Tell me. Why nobody knows? Why that name is not there in the book? The name is not there in the book क्योंकि वो उसके दोस्तों का नाम था और उसी के नाम से उसने कुछ अपना क्रिएट किया था. ठीक है. Now everybody knows how to teach, but correctly कैसे समझाना है, simplify कैसे कराना है, बस वो यही explain कर रहा था. The thing is, stop copying others. The more we start copying others, the more we think कि मुझे उनके जैसा करना है, ऐसे करना है. Where you are going, you're losing your own personality. The only key, if you want to build a personal brand, is be authentic. How many of you are able to connect with me? अगर आप authentic नहीं हो, तो कहीं ना कहीं it is going to clash. It is going to clash with every single thing. So first and foremost thing is you got to be authentic if you want to build a personal brand. How many of you agree with me? Type A in the chat box. How many of you feel कि perfectionism नहीं करना है? Everybody was getting into that perfect definition of that word, but there is nothing called perfectionism. Yes, type A in the chat box. Yeah, Ashok is writing because they can't think beyond their books. Exactly, because they can't think beyond something that they have already been told. इसी तरीके से हम wired हैं. And that is the reason why we need to rewire our subconscious mind. Okay? When it comes to
building your personal brand, when it comes to having that confidence, when it comes to any single thing. So the challenges that you face in front of the camera, number one, when you feel anxious and nervous every time when you think about speaking in front of the camera, what is the activity that you do? Type that activity in the chat box, or maybe what you feel like. Just type that feeling. जब आपको anxiousness होती है, nervousness होता है, तो आपको क्या लगता है? Type that in the chat box. When you feel anxious, you know. So here is one thing that I used to do. Here is one thing that I used to do when I started recording videos. Okay, Rachna is saying I just need a push from mentors. Yes, absolutely. That really works. When you get a support system, when you get the push from the mentors, it's like you can do it, then you're able to break that anxiousness. क्योंकि जब भी आप first time video बनाते हो, पता है, when I went for my first audition, I was so anxious. I remembered all the lines, and when I came in front of the camera, I was like, what was my line? It was 30-second line, I just forgot. And next time I said, okay, I'll give one more. And then I just calmed myself down and I gave it and it was done. So the first and foremost thing is इस चीज को accept कर लो कि anxiousness होगी जब भी आप first time record करोगे. But when you're doing it for the 10th time, 12th time, you'll be used to it. You'll be so confident. So here is one technique that I'm going to reveal in front of you. I'm going to share that technique with all of you. That will help you to combat any kind of anxiousness when it comes to speaking in front of the camera. Okay, that is called TBR technique. Now, what is the technique? 4 counts inhale, 4 counts hold, and 6 counts exhale. It is called 4-4-6. I happen to have an experience of breath work, and this has truly helped me. कोई भी webinar हो, कोई भी workshop हो, कोई भी video हो, even if today I have, even if like any single time अगर मुझे video बनाना है और मैं थोड़ा सा भी anxious हो रही हूँ, so I do this once, twice, thrice, and I'm absolutely fine. How many of you would like to do this activity with me for once? Type I in the chat box. इसको हम खुद करेंगे. Type I in the chat box. How many of you want to do? Okay. So here is what you need to do. Keep your hand on your heart, everybody. Take a deep breath. Relax yourself. And now just shake your hands. Just shake your hands. Everybody just shake your hands. Just let go of any kind of anxiousness, any kind of stress before doing it. Okay? And let us do this TBR technique now. Your hands on your heart. 4 counts inhale. 1, 2, 3, 4. Hold your breath. 1, 2, 3, 4. And exhale. 6 counts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can do this 3 times before making any video in case you feel slightly stressed out, slightly nervous. This works like magic. I've been doing it. Now I do not do because I don't have to do it. कभी-कभी मैं कर लेती हूँ अगर मुझे लगता है तो. Okay, next challenge. Okay, let me read in the chat box. Okay, everybody has done this activity. How many of you feel relaxed? Instant relaxation. You felt calm down. अभी mind में बहुत सारे thoughts चल रहे थे. अभी एकदम से relax हो गए. Calm down हो गए. See, breath work works like magic. It works like magic. All the time I've seen. All right. Jumping to the next challenge, next pain point, and that is I struggle to come across as a natural and confident person in front of the camera. How many of you agree with me? Type yes in the chat box. You tend to, struggle to come across as a natural and confident person in front of the camera. Even I was like that.
मतलब मेरे सामने ये चीज हमेशा होती थी कि जब कैमरा ऑन नहीं है, आई वाज लाइक एब्सोल्युटली फाइन, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, एंड द मोमेंट द कैमरा इज ऑन, आई यूज्ड टू फील लाइक ओ माय गॉड, oh my god, what's happening. But I remember when I was shooting for my television serial called Collector Bahu, और हमारा एक hall में scene था where I had the dialogues with lot of characters over there. So I had this thick script with me, मेरे पास एक मोटी सी script होती थी, and the lines were like really long. So what I did, I memorized all the lines, मैंने सारी lines याद कर ली. बट आई वॉज फीलिंग कि ओ माई गॉड, मेरा इन सबके साथ सीन है, सारे बड़े बड़े सीनियर एक्टर्स हैं, ये मेरा पहला सीरियल है, पता नहीं मैं कैसे करूंगी, मुझे याद भी रहेगा नहीं रहेगा, 50 थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे थे. ठीक है, फिर भी मैंने कहा हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा. बट बिफोर द टेक, व्हेन द डायरेक्टर सेड टेक, करने से पहले भी मेरे हाथ में स्क्रिप्ट थी और मैंने छोड़ दी. एक्शन बोलते ही मेरा डायलॉग था, एक्शन बोला, 5 सेकेंड हो गए, मैं ब्लैंक. आई वॉज कंप्लीटली ब्लैंक. आई वॉज लाइक, what was my dialogue? I just forgot. See, I'm sharing my vulnerability with all of you. I'm sharing what exactly happened. And everybody judged me that time. मुझे ऐसा लगा कि यार मैं सीरियल कर रही हूँ, मेन लीड मुझे ऑडिशन में सिलेक्ट किया गया और मैं ही नहीं बोल पा रही हूँ, इतने बड़े बड़े एक्टर्स हैं, सारे टीम मेंबर्स हैं, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे. Because I was like so anxious. After that, I said I need some time. Then again, I went back to my script. I worked with some of the senior actors. They guided me. Next time, one go में पूरा scene हो गया. Within one go, I took one take में everything was done. So मेरे साथ भी ये चीज हुई है. I'm sure आपके साथ भी होगी. ये तो हम लोग शूटिंग कर रहे हैं जहाँ पे कैमरास लगे हैं, बहुत सारी चीजें हैं. आपको एक सिंपल सा वीडियो बनाना है. So it's not that difficult for you. First and foremost thing is, it is absolutely normal. लेकिन इस पर्टिकुलर चीज में एज कोचेस, एज ट्रेनर्स, एज वीडियो क्रिएटर्स, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है व्हेन इट कम्स टू स्पीकिंग, व्हेन इट कम्स टू एस्टैब्लिशिंग योर अथॉरिटी एज अ पब्लिक स्पीकर, एज अ ट्रेनर, एज अ कोच, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट योर बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी बिग रोल? टाइप yes in the chat box. बॉडी लैंग्वेज देखते ही समझ में आ जाएगा कि सामने वाला अंडर कॉन्फिडेंट है या कॉन्फिडेंट है. जिस तरीके से वो खड़ा होता है, चलता है, देखता है, बात करता है. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी दैट बॉडी लैंग्वेज प्लेज अ वेरी बिग रोल व्हेन इट कम्स टू कॉन्फिडेंस एंड कम्युनिकेशन? Yes. So I'm going to share exactly this particular thing with all of you. But before that, let me ask you a question. Are you aware that there are more than 7 type of body languages? क्या आपको पता है 7 type की body languages होते हैं? Type yes in the chat box if you are aware of it. Let me read. Okay. Some of you are saying no. So I'll just give you an example, like facial expressions होते हैं, hand gestures होते हैं, right? The way you talk, the way you see, yeah? Lot of things. Your posture, आप कैसे खड़े हो, आपके shoulders slouch कर रहे हैं, इसका मतलब आप थोड़ा सा under confident, आप straight खड़े हो, आप इस position में खड़े हो, it seems to be very confident. Everybody do this language, do gesture with me. मेरे साथ करिए. So when you are doing this, everything gets aligned. Have you observed the top speakers, most of the successful people, even Elon Musk, ठीक है, बड़े बड़े जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, they tend to sit like this, hand mudras, yes. और ये हमारे कल्चर से ही इंस्पायर्ड है. Our ancient culture, हमारे यहाँ पे मुद्रा थेरेपी भी कही जाती है in holistic healing, because it aligns every single thing. How many of you are aware that our body is made up of 5 elements? पंच तत्व. इन सब चीजों को आपने एक साथ अलाइन कर दिया, ऑटोमेटिकली आप एक कॉन्फिडेंट पर्सन डिक्लेयर हो गए. दिस इज द मैजिक मुद्रा. एवरीबडी, आई एम गोइंग टू गिव यू अ टिप. जब भी आप कोई वीडियो बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, एंड व्हेन यू सी दैट द फोन इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू हैव अ डिस्टेंस, जस्ट स्टार्ट विद दिस. यस. क्षितिजल पावन गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा. ये हमारे अपने शास्त्रों में ये चीज है. तो उसी चीज से हम इंस्पायर होके क्यों नहीं अपने प्रोफेशन में उसको लेकर आते हैं? ठीक है. एंड यू कैन ऑल्सो यूज दिस जेस्चर.
आप इसको भी यूज कर सकते हैं जैसे हम बात करते हैं शोल्डर्स रिलैक्स करने, बट स्टार्ट विद दिस. ओके, ग्रेट, ऑसम. नाउ let me ask you one very, very important question. How many of you are aware of the rule 7, 38 and 55, especially when it comes to the body language and communication? Not just body language, but आपका communication. Since you all are trainers, speakers, coaches, कभी ना कभी आप अपना webinars करोगे, workshops करोगे, कुछ लोग already कर रहे हैं, कुछ लोगों को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है. How many of you are aware of this? This is a very important part of communication and public speaking. So, number one, some of you are aware of it, some of you are not aware of it. Yes. So, 7% of the meaning is communicated through spoken word. आप जो भी अपने सेशंस में बोल रहे हो, सिर्फ 7% का वो समझ में आता है लोगों को. 38% is through the tone of your voice. एक होता है, अब मैं आपसे ऐसे बात करूं, hello everyone, good morning, good evening, I hope you are doing fine, and we are going to talk about how to be confident in front of the camera. कैसा लग रहा है? So we are going to think about this, and we are going to talk in this like, will you be interested? And if I say, hello everyone, today we are going to understand how you can be an effective public speaker, become more confident and establish your authority in front of the audience and create your personal brand. Change of the state. This is the magic that happens. Okay. So this is what the difference, I just wanted to show you, demonstrate you, how exactly it, makes a lot of difference. And 55% is through your body language. अगर मैं ऐसे बैठ जाऊंगी, ऐसे होके बैठ जाऊंगी, आप interested होगे? No, my spine is ऐसे bent and I'm like, what exactly is happening? I mean, what this person is telling? I'll sit straight. I'll have that calmness. I'll speak with pause. When I have to increase the speed of my words, I will do that. When I have to take a pause, I will do that. When I have to change my tune, voice का मुझे tone change करना होगा, उस तरीके से हम करेंगे. क्योंकि when I was working as a dubbing artist, I'm still, unless you are Stephen Hawking. Absolutely right, Ashwini. Absolutely right. So when I was doing this workshop on dubbing, because I have also worked as a voiceover artist, so we used to learn these skills कि आपके voice को आप कैसे modulate कर सकते हो, आप एक better तरीके से कैसे बोल सकते हो, आपकी voice में कितना ज़्यादा, पता है क्यों? क्योंकि जब आप किसी से communicate कर रहे हो और आपकी voice में changes आ रहे हैं, तो वो interested होंगे आपकी बात सुनने में. How many of you feel कि आपके ऑडियंस को एंगेजिंग होना बहुत जरूरी है? आपके जो सेशंस हैं, ट्रेनिंग सेशंस हैं, या कुछ भी वीडियो बना रहे हो आप, उसमें एंगेजमेंट थोड़ी सी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो रही है. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट? एंथुसियाज्म अट्रैक्ट्स ऑडियंस. यस रचना, एब्सोल्युटली. अब वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हो सकता है कि आप एक ही टोन में बात कर रहे हो. अगर आपने टोन थोड़ी सी ऊपर कर ली, थोड़ी सी नीचे कर ली, थोड़ा सा बैलेंस बना लिया, ऑटोमेटिकली एवरीथिंग गेट्स सिंक. या How many of you are learning something new and getting bulb on moments? Type BM in the chat box. Type BM in the chat box. Hello, everyone. Perfect. Are you enjoying? Are you enjoying? Perfect. Everyone. Thank you so much. Thank you so much. So, क्यों ना हम एक एक्टिविटी करते हैं साथ में? ठीक है? एक एक्टिविटी करते हैं साथ में, और जब भी आप किसी भी वीडियो को आप बनाने वाले हो, उसके पहले आपको ये चीज बोलनी है. द फर्स्ट एक्टिविटी दैट वी डिड वाज TBR टेक्निक, दैट इज 4-4-6. उसके बाद वी लर्नड द इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लैंग्वेज. एंड व्हेन यू वर्क ऑन योर बॉडी लैंग्वेज, व्हेन यू वर्क ऑन योर टोन ऑफ द वॉइस, ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके यू slowly become a natural and a confident person in front of the camera. ठीक है? So now everybody, let us repeat this one very, very powerful sentence जो हमने starting में भी बोला था. हमने starting में बोला था I am amazing. ठीक है? तो मेरे साथ everybody is going to speak I am confident. Now please, it's a humble request. Ladies and gentlemen, boys and girls, can you please turn on your videos?
Can you please turn on your videos? Can you please turn on your videos, everybody? I can see Rachna, I can see Ashok ji, Jitendra, Priya. Hi Priya, good to see you. Shipra, Rama, NH, Tapas. Please turn on your videos. Nafiz, please turn on your videos. I can see Naresh also. Anil, please turn on your video. Gopal Jaiswal, Abdul, Manoj, everybody. Shweta, hi Shweta, how are you? Hi Sanha, Ajit Vidya, everybody. Hi everyone. Hello. Okay, thank you so much for those, and Lakshmi Narayan. Okay, great. So let us do this activity together. Keep your hands like this. Okay. And now you have to say, I am confident. As loud as you can. I am confident. धीरे नहीं बोलना है. अब देखिए, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही. हो सकता है कि आपके आसपास वाले लोग थोड़े से डर जाएं. डर जाने दो. बिकॉज आप अपना जलवा दिखाने वाले हो. आप जलवा ऑलरेडी दिखा रहे हो. अब ये एक्टिविटी करेंगे. ठीक है, एवरीबडी इज गोइंग टू डू दिस एक्टिविटी टुगेदर. सो उस केस में क्या करना है, आपके अंदर जितने भी इनहिबिशंस हैं, यार पता नहीं कैसे समटाइम्स वाली जो चीज है ना, वो भी हम इरेडिकेट कर देंगे. ठीक है, लेट अस डू इट टुगेदर. 5 times you have to say I am confident as loud as you can. I am confident. I believe that I am confident. I am confident. Beautiful, fantastic. Thank you so much, everyone. How do you feel when you say this to yourself, that I am confident? Type that feeling in the chat box. If it feels amazing, type A in the chat box. Feel more confident. Rachna, Jitendra says empowered. Ashok says A. Bola Jagadish says A. Shweta says A. How many of you are feeling confident? It is empowering. Absolutely. Remember in the Delhi event when I used to, request each one of you, not request, but I actually used to push you to say this with, with a lot of energy. I'm confident. I'm amazing. All of what is happening is your state of mind is changed. You vibrate at the highest frequency. This is the magic that is happening. ऑटोमेटिकली जब आपका वाइब्रेशन हाई होगा, आपका एनर्जी हाई होगा, तो आपके अंदर कोई ऐसे लिमिटेशंस नहीं होंगे. आर यू एबल टू रिलेट, कनेक्ट, कनेक्टिंग द डॉट्स? एकदम से अगर मैं बोल दूं चलो मोबाइल उठाओ वीडियो बनाओ, you'll be like, अरे हम कैसे बनाए, किस टॉपिक पे बनाए, हमने तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया, अरे कैसे होगा, कहाँ पे कैसे, मतलब समझ ही नहीं आएगा. और अभी आपने काम डाउन किया, अपने आप को कहा आई एम कॉन्फिडेंट. अब जब एक्टिविटी होगी तो आप बड़े आराम से कर लोगे. बोलो हाँ, से यस. ब्यूटिफुल. लेट मी टेक यू टू द नेक्स्ट पार्ट. यप. ओके, ग्रेट. नंबर 1 थिंग, कॉस्ट ऑफ नॉट ओवरकमिंग कैमरा फियर. अब आपके सामने एक चैलेंज आता है कि जस्ट इन केस यू फील कि वीडियो कंटेंट आप थोड़ा सा अवॉइड करते हो बिकॉज यू फील कि आप स्लाइटली अनकंफर्टेबल हो ऑन द स्क्रीन. हालांकि आप अभी से नहीं होगे बिकॉज अभी आपने एक एक्टिविटी करी है, यू हैव ऑलरेडी डन दिस एक्टिविटी विथ मी. बट अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आप इस चीज से डेफिनेटली रिलेट करोगे और अंडरस्टैंड करोगे कि इस पूरे केस में जितना आप अवॉइड कर रहे हो, द मोर यू आर अवॉइडिंग, the more it is becoming expensive for you. आपके लिए महंगा हो रहा है. Now I'll explain you how it's becoming expensive. Number 1, avoidance is costing you in terms of losing opportunities. How many of you agree? Can you see this picture of the triangle downwards? नीचे की तरफ जा रहा है. जितना आप avoid कर रहे हो अपनी visibility कम करना, आप वीडियोस नहीं बना रहे हो, आप ये चीजों को आपको लग रहा है कि शायद इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी और से बना लेंगे, कुछ कर लेंगे, ठीक है जाने दो, इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी अपॉर्चुनिटीज लूज हो रही है, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग कम हो रही है, एंड इट इज अफेक्टिंग द क्लाइंट्स. हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट? यू आर लूजिंग क्लाइंट्स एंड योर बिजनेस इज नॉट ग्रोइंग. लो, सी द लोअर पार्ट. आपका बिजनेस नहीं ग्रो करेगा अगर आप वीडियो कंटेंट नहीं बनाओगे, अपना पर्सनल ब्रांडिंग नहीं करोगे. इमेजिन अगर आपको वेबिनार्स करने हैं, वर्कशॉप्स करने हैं, ठीक है,
और आपको ये चीज पता है कि ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, वो अल्टीमेटली इट इज बीइंग एक्सपेंसिव, यस और नो? यही आपने बनाते रहते अब दिस थिंग दैट हैपेंड, टेडेक्स टॉक, ऐसे एकदम से नहीं आया है. देयर इज समथिंग दैट आई मैनिफेस्टेड, आई बिलीव्ड इन दैट. मैंने एक विजन बोर्ड बनाया था और मैंने प्रॉपर कॉन्शियस तरीके से उसको बनाया था, ऐसे ही नहीं बना लिया. So I started making videos, I started posting without thinking कि ये करना है मुझे अच्छा लगता था. I liked it. I started creating धीरे धीरे करके, and one day I get a message. I was like, what? TEDx speaker? Really? I would really like to do. Then I got an official email from there. So it is the process. भगवत गीता में भी यही लिखा है, एटॉमिक हैबिट्स में भी यही लिखा है. जितना आप गोल के ऊपर फोकस करोगे उतना आपको एंग्शियसनेस होगी. जितना आप हैबिट्स पे फोकस करोगे, जैसे हम बिजनेस हैबिट्स की बात करते हैं ना, सो कैन वी डू दिस, कैन वी इंक्लूड दिस बिजनेस हैबिट ऑफ क्रिएटिंग कंटेंट एवरी सिंगल डे? क्या ये कर सकते हैं? टाइप यस इन द चैट बॉक्स. इट रियली इम्पैक्ट्स. मतलब मुझे मैं सच बताऊं तो मुझे मैंने जो वीडियोस बनाने शुरू किए थे, आई स्टार्टेड गेटिंग डीएम्स आल्सो दैट आई वुड रियली लाइक टू कनेक्ट, और आई वुड रियली वांट योर हेल्प, कैन यू प्लीज हेल्प मी आउट, बिफोर इवन गेटिंग डाउन टू क्रिएटिंग एड्स. ठीक है, मैं वीडियोस बना बना के मुझे बहुत हेल्प मिली थी. So see the magic, see the impact that it is going to create when you also start doing it. और आप नहीं कर रहे हो तो it's causing you a lot of pain. Now, next is, I worry about being judged for how I look or sound. Okay, this one is crazy. Now I'll tell you, I'll share that incident with one of you, with all of you. So I know this person, one of my friends, who is now a very well-known business mentor. Okay, so he had some kind of a challenge. उनको थोड़ा सा एक body में challenge है. And I used to feel कि पता नहीं how he'll be doing it. But he started creating videos. उन्होंने बेशर्मों की तरह वीडियोस क्रिएट करने शुरू किए. Started doing it, doing programs, webinars, करते गए. ये सोचा ही नहीं कि लोग उनके बारे में क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे, कैसे दिख रहे हैं, कैसे चल रहे हैं. He didn't give a damn about it. Initially हो रही थी दिक्कत, but धीरे धीरे करते now he is making more than 40 lakhs per month. 40 lakhs per month. Type crazy in the chat box if you find it crazy. One of the topmost business coaches I know. And I'm like, wow, this is so inspiring. Yes, Rachna, Lakshmi Narayan, type crazy in the chat box. Type crazy in the chat box. See, कितना बड़ा impact ये create कर सकता है आपके ऊपर. जरूरी नहीं है कि आपको perfect तरीके से बनाना है, but बनाना है. You're very much comfortable, no? कि पोस्ट लिख दी, यहां से कॉपी पेस्ट करके पोस्ट बना दिया, मैसेज कर दिया. मैं कैमरा के सामने कैसे आऊं? बट सी, इसी को करते आपने अपना ब्रांड बना लिया. ब्रांड बनाने के लिए कोई एक स्पेसिफिक मुहूर्त नहीं निकालना है, आप एक ब्रांड हो, ये बात मानना. एवरीबडी, कैन आई टेल यू समथिंग? यू आर अ ब्रांड. I am a brand. Type I am a brand in the chat box. I am a brand. Declare कर दो अपने आप को. I am a brand. Sanha, everybody. I want Jitendra, Ashok, Rachna, Raj, Vidya, Jagdish, Priya, Lakshmi Narayan, Imtiaz Ahmed, Sanha, Shipra, Shweta, Manoj. Everybody write I am brand in the chat box. Tapas, Kamalesh, The Soul Radiance, Anil. Everybody write I am a brand in the chat box. आपने क्या किया? आई एम अ ब्रांड, आई एम अ ब्रांड, आई एम अ ब्रांड. वाइब्रेशन चेंज कर दिया आपने. समझ रहे हो? एवरीथिंग इज कनेक्टेड. ओके, so here's one thing beautiful. I can see lot of you are writing I'm a brand in the chat box because you are a brand. Here is one thing, look at this. ये पिक्चर शायद थोड़ी सी ब्लर लग रही होगी, but you see how you see yourself is something that is the only thing that makes a lot of difference. वो एक cat है, and the cat is seeing herself like a lion. So in order to establish yourself in the public, in your space of coaching, training, business,
You gotta believe that you are the lion of the jungle. लायन को बताना नहीं पड़ता कि तुम लायन हो, उसको पता है, उसमें कॉन्फिडेंस है. टाइप yes in the chat box if you agree with me with a smile. टाइप yes in the chat. उसको पता है वो ब्रांड है, वो लायन है, उसको किसी से डर नहीं लगेगा, उस सामने वाला उससे डरेगा. बट हमें यहाँ पे डराना नहीं है, हमें यहाँ पे कॉन्फिडेंट फील करना है, हमें अपने लिमिटिंग बिलीव्स को तोड़ना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि ये सारी चीजें कनेक्टेड है. ओके, ऑलराइट. हाउ मेनी ऑफ यू आर लविंग इट? ओके, आई कैन सी crazy, wow, I'm a brand, yes. Everybody is loving it. Type L in the chat box if you are loving it. If you're finding it super, super energetic, type L in the chat box. Let me see a lot of L's. Wow, I can see a lot of you have typed L in the chat box. Tapas, Ashok, Priya, everybody. Beautiful, Lakshmi Narayan, Rachna. Beautiful, very nice. So you need to create that lion mentality. Okay, now let us understand कि जो techniques चाहिए हमें to build confidence and overcome the camera fear. ठीक है, कैमरा फियर हम कैसे ओवरकम करें, क्योंकि कहना बहुत आसान है कि हाँ ठीक है आई विल डू इट, बट समटाइम्स वो एक थोड़ा सा फियर रहता है, थोड़ा सा मतलब मैं ठीक तो दिख रही हूँ, मेरे बाल तो ठीक हैं, मेरा लिपस्टिक तो करेक्ट है, मुझे मेकअप करना पड़ेगा, मुझे नया शर्ट पहनना पड़ेगा. अरे भाई जैसे हो बहुत अमेजिंग हो आप. या दैट्स विद ओनली विद वुमेन, बट देयर आर मेन ऑल्सो हु फील कि नहीं मुझे परफेक्टली ड्रेस होना है. अगर मैंने परफेक्टली ड्रेस नहीं पहना, आउटफिट नहीं पहना, मेरे बाल थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, तो मेरा वीडियो अच्छा नहीं आएगा. अरे आप कॉन्फिडेंट फील करो. ठीक है, सब चीजें. बीबी की वाइन्स, हाउ मेनी ऑफ यू नो बीबी की वाइन्स? हैव यू सीन हिज अर्लियर वीडियोस? बीबी की वाइन्स, भुवन बाम, वन ऑफ द फेमस यूट्यूबर, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स. स्टार्टिंग में क्या क्या क्रिएट कर रहे थे वो? टूटा फूटा घर, कुछ नहीं सोचा था. he just had that imagination that he is going to do something crazy. Beer biceps, how he started his journey. आज की डेट में YouTube पे कंटेंट बनाते 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 अब लोगों को कोर्सेस बता रहे हैं कि हाँ पॉडकास्ट कैसे बनाना है, ब्रांड कैसे क्रिएट करना है. अंकुर वारिकू, राइट. बीबी की वाइन्स इज वन ऑफ द लाइक बहुत इनिशियली स्टार्टिंग में यूट्यूबर थे. ठीक है, प्राजक्ता कोहली वाज अ यूट्यूबर. स्टार्टिंग में उनके बहुत बेसिक बेसिक वीडियोस हैं, but they believe that something is going to make a lot of difference. Ankur is on the top of the line, absolutely. Imagine उन्होंने रीस्टार्ट किया अपनी लाइफ 40s की एज में, जो भी उनका नियर बाय और अलग अलग स्टार्टअप के साथ जो उनका एक्सपीरियंस था, वो जिस तरीके से शेयर करते हैं, इट इज सो ऑथेंटिक. कितना लोग कनेक्ट करते हैं, एंड इट्स सुपर इंस्पायरिंग. द वे ही मैनेजेस हिज रिचुअल, द वे ही मैनेजेस मेक श्योर कि उनका रिलेशनशिप अपनी वाइफ के साथ, फैमिली के साथ बहुत अच्छा रहे. द वे ही shares the content with the public. एक ट्रस्ट बिल्ड होता है ना. जब ट्रस्ट होगा तो आप उसकी चीज को मानोगे, आप उस चीज को फॉलो करोगे. उनको किसी ने आके नहीं बोला, उन्होंने बिलीव किया कि वो हैं. अपनी आइडेंटिटी, आप पता है, यू आर योर ओन सुपर हीरो. कोई नहीं है, आप खुद सुपर हीरो. दिस इज द TEDx टॉक ऑल्सो, बी योर ओन सुपर हीरो. ये मैंने TEDx टॉक पे बोला था. सो दिस जस्ट क्लिक्ड इन माय माइंड एंड जस्ट हैपेंड, आई हैपेंड टू शेयर इट. सो बिलीव दैट यू आर योर ओन सुपर हीरो. नाउ फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट ये जब फियर आता है कि you I can't shake the fear of messing up when it comes to recording. Lot of successful people make mistakes. There are many successful people who have, just give me a second, जिन्होंने mistakes करी हैं अपनी लाइफ में, बट एक ऐसी चीज है जो उनको सबसे डिफरेंशिएट करती है, एंड दैट इज दे हैव लर्न्ड टू एम्ब्रेस देम. और उन्होंने बहुत आराम से वल्नरेबिलिटी के साथ में उस मिस्टेक को जो है एम्ब्रेस किया है और उससे लर्न किया है. हाउ मेनी ऑफ यू, बी वेरी ऑनेस्ट, हाउ मेनी ऑफ यू टेंड टू फील कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं है अभी तक, कुछ ये सारी चीजें नहीं हुई हैं, वीडियो बना ली उसमें मिस्टेक हो जाएगी, लास्ट वीडियो पे इतने ही व्यूज आए, छोड़ो क्या होगा, जाने दो, नहीं करना. या फिर 4-5 वीडियोस बनाए, उसमें मिस्टेक हो गई, फिर लग रहा है कि नहीं आई कैन नॉट मेक इट, लीव इट, छोड़ो जाने दो. कौन मेहनत करे,
कौन वापस उसको रिकॉर्डिंग में लगाए, कौन ट्राइपॉड सेट करे, कौन लाइटिंग ठीक करे, कौन फिर से चेंज करे? हाउ मेनी ऑफ यू फील कि यार इतना नहीं करने की जरूरत है? यू सी, अवॉइडेंस इज एक्सपेंसिव. Type R in the chat box if you're able to relate. Type R in the chat box. So यही चीज है जिस चीज को हमें ब्रेक करना है हमारे नेक्स्ट एक्टिविटी में. निकालिए अपने मोबाइल फोन्स. Let us do this crazy activity together, which I am about to share with all of you. And the activity name is, okay, OTV. Now, how many of you know OTP? OTP पता है आपको? आजकल OTP से बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं. सही OTP डालोगे तो सही चीज होगी. यहाँ OTP नहीं है, यहाँ पे OTV है. What is OTV? You must be thinking, what is OTV? It is one take video. No retakes, no nothing. बार बार ये नहीं सोचना, बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी नहीं सोचना. I am going to give you 60 seconds. आपको 15 से 20 सेकंड का, 30 सेकंड का बढ़िया सा वीडियो बनाना है और शेयर करना है ग्रुप में. ठीक है? You have to make a video. I am going to make I'm going to put myself on mute. सभी लोग अपने कैमरास निकाल लीजिए. एक और इजी एक्शन बताती हूँ, मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देती हूँ. चलो. Topic can be anything. This is the game. Topic can be anything. Like for example, you just share your name. What is something that you're driven by? It could be your mission. It could be your vision. Or maybe you learned 3 things from some book. Or maybe what you are grateful for. कोई भी टॉपिक हो सकता है. यहाँ पे ना मैं आपको कोई टेम्पलेट रेडीमेड नहीं देने वाली हूँ. दिस इज यू. ये पता है दिल से आना चाहिए. सो कुछ भी अगर आपके सामने है, इफ यू आर सीइंग, इफ आई कैन सी दिस इन फ्रंट ऑफ मी, मैं इसके बारे में कुछ बता सकती हूँ. ठीक है? सो क्विकली टर्न ऑन योर कैमरास. निकालिए अपना फोन, अनलॉक करिए. एवरीबडी टर्न ऑन योर वीडियोस. सब लोग अपने वीडियोस को टर्न ऑन करेंगे. सब एवरीबडी, सनहा, अहमद, शिप्रा, सभी लोग अपने वीडियोस को टर्न ऑन करेंगे. मैं आपको 60 सेकेंड्स दे रही हूँ. लेट मी टर्न ऑन माई टाइमर. क्लॉक से आता है, राइट? सो स्टॉप वॉच. मैं 60 सेकेंड्स का टाइमर यहाँ लगा रही हूँ. ठीक है? और टाइमर ऑलरेडी है, आई थिंक. ग्रेट. सो आपके पास में 1 मिनट का टाइम है. बढ़िया से आपको वीडियो बनाना है. मैं अपने आप को म्यूट कर रही हूँ. जो है आपके दिल में वो आप उसको रिकॉर्ड करके ग्रुप पे शेयर करेंगे, जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है. ठीक है? ऑन योर मार्क्स, without giving a second thought. OTV, get set and go, everyone. Ten seconds. Three, two, one, stop. Superb, awesome, congratulations, well done everyone. So here's a special bonus for everyone who share this video. ये नहीं कि आपको अपने गैलरी में रखना है और उसको सीक्रेटली रखना है, कोई मेरा वीडियो ना देखे.
जो लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे हमारे ग्रुप में, ग्रुप को ओपन कर दिया जाएगा, दे विल बी गेटिंग some crazy bonus, right? You will be getting some beautiful gifts that will help you a lot in your business journey. And the most important thing is that has to be around 30 to 40 seconds, not very long. Okay. How many of you need more time? कर लिया आपने? How many of you need more time? I guess everybody has done. My recording got stuck. Okay. No issues. You can still make it. Absolutely fine. No problem. अगर आपके फोन की मेमोरी फुल हो चुकी है, it's time to delete the not important documents, pictures, WhatsApp messages, good morning, ये वो फलाना ढिमकाना. Delete that. Create that space. हम लोग ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, पता है, डीक्लटर करना. यू कैन शेयर दैट इन द ग्रुप, राइट? जो आपका कॉन्फिडेंस वाला एक ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें आपको लिंक शेयर किया गया है, आप उसमें शेयर करिए वीडियोस. आई विल रिव्यू ऑल्सो. Please do it. Okay. You have 10 seconds to share. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop, everyone. Now let's jump to the next part. Okay. Super excited. Yeah, this is quite interesting. All right. All right. So here's one thing. Most of the people feel, ये होता है कभी कभी, कि my message gets lost because I can't express myself confidently. कहीं आपकी ऐसी हालत हो जाती है कि आप ढूंढ रहे होते हो, आपको लगता है कि यार मैसेज शायद मैं बोलने कुछ और जा रहा था पर बोल कुछ और दिया, शायद उसको प्रॉपर तरीके से मैंने कंपाइल नहीं किया, तो बेटर नॉट मेक इट. How many of you feel this? How many of you are able to relate? Type R in the chat box because एक और टेक्निक मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ. So जो आपको इसमें इतना सब कुछ सीखने को मिल रहा है, कितना मजा आएगा जब आप इसको एज अ टीम, जब हम इसको साथ में करेंगे, कितना मजा आएगा. How many of you are able to relate? होता है ये चीज, कभी कभी होती, कभी कभी नहीं होती. एंड कितने लोग सामने लिखा हुआ है टेक्स्ट, उसको देख देख के बोलते हैं और हमें लगता है कि हाँ ठीक है. कितने लोगों को लगता है ये चीज कि हाँ सामने लिखा होगा तो हमारे लिए इजी होगा, लेकिन ऑन द स्पॉट, लेट्स से यू आर गोइंग फॉर अ वेकेशन, लेकिन आपको कुछ ऐसा बोलना है बट आपको स्क्रिप्ट चाहिए, हर चीज की स्क्रिप्ट चाहिए. व्हाट इफ आई टेल यू कि आप उस चीज को बड़े आराम से कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो विदाउट इवन स्क्रिप्ट. स्क्रिप्ट की जरूरत भी नहीं, पता है. आई वॉज डूइंग दिस सेशन ऑन मॉर्निंग रिचुअल एंड हैबिट मास्टरी मतलब कुछ एक दो साल पहले मैंने ये सेशन किया था. तो मैंने एक प्री प्रिपरेशन टाइप का वीडियो बनाया था और मेरे दिमाग में सारे पॉइंट्स थे. 12 मिनट का मैंने वीडियो बनाया था विदाउट एनी सिंगल रीटेक. दिल से ऊपर एक बार में पूरा हो गया विदाउट एनी स्क्रिप्ट. डू यू वांट टू बिकम दैट कॉन्फिडेंट पर्सन? टाइप यस इन द चैट बॉक्स. अदरवाइज हमारे साथ होता है ना कि स्क्रिप्ट्स होती हैं, चीजें होती हैं, हमने बस कॉपी पेस्ट कर लिया. वो भी करेंगे क्योंकि वो उससे आपका सिंप्लीफाई हो जाता है. सिंप्लीफाई हो जाता है आपके लिए, टाइम सेविंग होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, एक एक चीज वो भी करेंगे. लेकिन आप ऐसे भी एक पर्सनालिटी बन पाओगे कि आप कॉन्फिडेंटली कहीं भी बोल सकते हो बिना आई सी ये. आप समझ रहे हो ये चीज? ओके. बट हियर इज वन थिंग. अगर आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, वो तो हम सीखेंगे कि कैसे आप बिना उसके कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो. देयर इज वन मोर थिंग दैट आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू, एंड ये आप कनेक्ट करोगे. एक बड़ी पावरफुल टेक्निक है. टेक्निक नेम इज RCC. व्हाट इज द नेम ऑफ द टेक्निक? टाइप RCC इन द चैट बॉक्स एवरीवन. व्हेन यू फील कि आपका मैसेज जो है लॉस्ट हो रहा है एंड यू कांट एक्सप्रेस योरसेल्फ कॉन्फिडेंटली, time to use the RCC technique. Now, what is the technique? Number 1, refine the message. जो भी आपका मैसेज है, अगर आप किसी को LinkedIn पे अपना मैसेज भेज रहे हो, आउटरीच कर रहे हो, आपने प्रॉम्प्ट्स डाले होंगे, बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स आए होंगे. आर यू एबल टू रिलेट विद मी? देयर आर लॉट ऑफ प्रॉम्प्ट्स दैट यू गेट एंड आप उसमें से सिलेक्ट करते हो, रिफाइन करते हो, करेक्ट, बिफोर सेंडिंग दैट. किसी को भी भेजने से पहले आप उसको रिफाइन करते हो. यस और यस. टाइप यस इन द चैट बॉक्स.
हेलो एवरीवन, यस, रिफाइन करते हो आप, उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी करना है। नंबर 1 इज रिफाइन द मैसेज, नंबर 2 इज स्पीक विद क्लैरिटी। ठीक है, क्लैरिटी का मतलब ये है कि आपका जो मैसेज है वो बहुत क्लियरली डिफाइन होना चाहिए। कई बार होता है हमारे वर्ड्स हम लोग फंबल कर देते हैं, हो जाता है, नेचुरल है। लेकिन हाउ अबाउट लर्निंग सर्टेन वॉइस एक्सरसाइजेस, जो मैंने खुद विद टाइम प्रैक्टिस करते करते, जैसे अब आज भी अगर मैं किसी डॉक्यूमेंट्री की डबिंग करने जाती हूँ, किसी फिल्म का वॉइस ओवर देने जाती हूँ, मैं बड़े आराम से कर लेती हूँ, ऑडियो बुक्स रिकॉर्ड करती हूँ, इन स्पाइट ऑफ डूइंग वेबिनार्स या प्रोग्राम्स, जो भी मैं चीजें कर रही हूँ। बट जो मैंने वहां से सीखा, अगर आप सीख पाए टू स्पीक विद क्लैरिटी, टू स्पीक विद कॉन्फिडेंस, हाउ विल यू फील? अमेजिंग। टाइप ए इन द चैट बॉक्स। ठीक है, सो फर्स्ट टेक्निक इज refine the message, second is speak with clarity, and third is be confident to connect। ठीक है, अब कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजते हैं, आपने उसको सर्च किया, फिल्टर आउट किया, फाउंडर है, इस एरिया में रहता है, इन लोगों को फॉलो करता है, उसके इतने इतने पेन पॉइंट्स हैं, आपने उस सारी चीजों को पूरी तरीके से कर लिया, रिफाइन किया, क्लैरिटी लेकर आया और कॉन्फिडेंट आए। इसी चीज को आपको अपने वीडियोस में इंप्लीमेंट करना है। दिस इज द सेम थिंग दैट यू हैव टू इंप्लीमेंट, बट इसका एक टेक्निक थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग हटके। ठीक है, so this is something that you have to understand. This is called message map framework, MMF. Number 1, कोर मैसेज क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, हेडलाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए। नंबर 3, आपके की पॉइंटर्स। एंड नंबर 4 इज CTA, या तो वो कंटेंट जो है रिलेटेबल होना चाहिए, शेयर करिए आप, इफ यू फील रिलेटेबल, शेयर इट विद समवन हु फील that person requires it, or if you want to connect with me on one DM to know more। इस टाइप का आपका कॉल टू एक्शन होना चाहिए, लेकिन उसके पहले आपका मैसेजिंग क्लियर होना चाहिए। आप जा रहे हो दिल्ली, लेकिन आपने रास्ता लगाया हुआ है मुंबई का, तो आप मुंबई जाओगे, फिर आपको आपको लगा रहे मेरे को तो दिल्ली जाना था, मुंबई कैसे आए? ठीक है, सो दैट मैसेज मैप फ्रेमवर्क, जैसे हमारा जो माइंड ब्रेन भी है उसी तरीके से काम करता है। एक ही पाथवे को आप फॉलो करेंगे तो वहीं लेके जाएगा, लेकिन आपने अपना पाथवे चेंज किया तो बेटर रिजल्ट आएगा, क्लैरिटी लेकर आए तो बेटर रिजल्ट आएगा। ठीक है, हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू कनेक्ट? टाइप सी इन द चैट बॉक्स। कनेक्ट, कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। जैसे लिंक्डइन पे हम कनेक्ट करते हैं, अगर हम ऑफलाइन किसी से मिलते हैं तो हम कनेक्ट करते हैं, हम दिमाग में सोचते हैं कि क्या बोलना है, आपके दिमाग में क्लियर होगा कि मुझे रिफाइन कर लिया मैंने, मुझे ये बात करनी है, कॉन्फिडेंटली आप बोल पाओगे और लोगों के साथ मिल पाओगे। एक दो लोगों के साथ से बेटर है 50 लोगों से मिल पाओगे। सोचिए आप 1 to 1 करें, आप 1 to many, many to many कर पाएंगे, 1 to many कर पाएंगे। कितनी पॉसिबिलिटी है इसकी, इफ यू लर्न हाउ टू डू इट and if you implement the RCC technique। Now, here's one thing, consistency and confidence in video creation, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अच्छा चलो एक बार बना लिया, 2 बार बना लिया, 1 हफ्ते बना लिया, लाइक ठीक है, उसके बाद आप कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे हो, यू टेंड टू ओवरथिंक एवरी सिंगल टाइम बिफोर रिकॉर्डिंग। होता है ये चीज होती है, एंड हियर इज व्हाट इट लीड्स टू, ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग की कैसा जाएगा, अभी मैंने ये बनाया, इसमें कितने व्यूज आए, कितने लाइक्स आए, बार बार आप उसको चेक करोगे। ठीक है, कई बार होता है कि आप यही सोचते सोचते आप बनाते ही नहीं हो, एंड दैट लीड्स टू प्रोक्रास्टिनेशन एंड परफेक्शनिज्म। अगेन द सेम कॉन्सेप्ट दैट आई हैड एक्सप्लेन्ड इन द बिगिनिंग। हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिलेट, एंड हाउ मेनी ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग कि अवॉइडेंस हैज बिकम एक्सपेंसिव, अवॉइडेंस ऑफ नॉट क्रिएटिंग योर कंटेंट। कल को अगर आपका कोई भी एड देखे, ठीक है, इफ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट योर वेबिनार, सो दैट पर्सन विल सर्च यू ऑन सोशल मीडिया, दैट पर्सन विल सर्च यू ऑन गूगल, करेक्ट? आपका यूट्यूब देखने की कोशिश करेंगे, या फिर आपको इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे। अब आपने वहां पे सिर्फ पोस्ट बना लिए, डू यू फील कि आज कहीं ना कहीं वीडियोस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है? वीडियोस बनाते तो हाँ ये बात तो सही है, ये बात तो ठीक है, अच्छा इसने ये भी बनाया, अच्छा इसने ये भी बनाया, वेरी नाइस, आई एम लर्निंग समथिंग। तो आप एक कनेक्ट करते हो उस चीज से, और अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो तो समवेयर इट इज इम्पैक्टिंग योर बिजनेस। यस और यस। सो ओवर थिंकिंग इज एनीवे लीडिंग टू प्रोक्रास्टिनेशन एंड परफेक्शनिज्म, जिसको हमें नहीं करना है, वी हैव टू अवॉइड इट। सो फॉर दैट
there has to be a system for consistency. How many of you are you able to see the screen? Yeah, LinkedIn promotes videos. Yes. So there has to be a system for consistency. क्योंकि चलो ठीक है, आपने एक आध बार बना लिया, 2 बार बना लिया, फिर एक होता है कि यार कंसिस्टेंसी एक चैलेंज आता है. यू आर टैलेंटेड, यू आर नॉलेजेबल, सारी चीजें, लेकिन जहां कंसिस्टेंसी की बात आती है वहां पर आपको लगता है एक सिस्टम. हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट समटाइम्स humans tend to fail but system never fails? सिस्टम अगर होगा, आपका ऑटोमेशन होगा, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें एग्जीक्यूटेड होंगी, तो बड़े आराम से चीजें हो जाएंगी. हाउ विल यू फील? यस तपस, हाउ विल यू फील कि अगर आपने अपने माइंड में कंसिस्टेंसी वाला एक सिस्टम खुद ही क्रिएट कर लिया, आपने अपने माइंड को इस तरीके से वायर्ड हो गए कि हाँ मुझे ये बनाना है, रूटीन है, जैसे आप ब्रश करते हैं, खाना खाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उसी तरीके से आपने इस चीज को एक कंसिस्टेंट पार्ट बना लिया, तो आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे? विल इट बी अमेजिंग? टाइप ए इन द चैट बॉक्स. बढ़िया रहेगा. कितना टाइम लगाना है? 5 मिनट, दैट्स इट. ज्यादा टाइम तो देना नहीं उस चीज को. 1-2 बार करोगे, 3-4 रीटेक्स लोगे, करते करते हो जाएगा. 5 मिनट्स यू कैन गिव, राइट? बट वो हो नहीं पाता है. दैट इज द रीजन वाई वी नीड टू क्रिएट दैट सिस्टम फॉर कंसिस्टेंसी. करेक्ट? सो हियर इज वन मोर टूल. एक और टेक्निक है, बहुत इफेक्टिव है, मतलब ये मैं खुद भी यूज करती हूँ. And this is a very famous rule which is called 5-second rule, which I learned from one of my mentors. Her name is Mel Robbins. How many of you know Mel Robbins? कहीं पे भी stuck हो रहे हो, कहीं पे भी overthink कर रहे हो, use the 5-second rule. What is the 5-second rule? 5 तक गिनती करो और एक्शन ले लो तुरंत. Do it. Simple. बहुत स्ट्रैटेजी नहीं है, बहुत ऐसे टूल्स नहीं है, बहुत ना खिचड़ी नहीं दिमाग में बनानी. ये आ रहा है दिमाग में, करूं कि नहीं करूं, चलो 1 2 3 4 5, कैमरा निकाला, बना लिया. सुबह उठना है, उठूं कि नहीं उठूं, अरे मन नहीं कर रहा है, आई डोंट फील लाइक गेटिंग अप, व्हाई शुड आई गेट अप? 5 4 3 2 1, गेट अप. दिस इज वेरी इफेक्टिव टेक्निक. हाउ मेनी ऑफ यू आर feeling mind blowing? This is crazy. We are learning lot of techniques and we are doing together. सबसे important चीज है साथ में करना. ठीक है? अब ये सारी चीजें एक साथ इतने कम टाइम में तो मैं नहीं सिखा पाऊंगी, बट जितना भी आप कर पा रहे हो, इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं, मजा आ रहा है. MB in the chat box, lot of MBs. Everybody take a deep breath and exhale. Write MB in the chat box. Superb. मजा आ रहा है. Great. So 5-second rule is something that is very effective जब आप overthink कर रहे हो या procrastinate कर रहे हो. ये बहुत बढ़िया टेक्निक है. ठीक है? Now कई बार ऐसे भी challenges आते हैं कि you do not know how to appear professional without sounding robotic. मतलब मुझे robotic भी नहीं लगना, but professional भी लगना है, but कैसे होगा नहीं पता. So here is one thing. How about combining your professionalism and relaxism? Both together. How about becoming a pro relax and building your authenticity? Will it be mind blowing for you? Type MB in the chat box. मजा आ जाएगा कि प्रोफेशनल भी लगेगा और आपको इतना प्रेशर भी नहीं आएगा, स्ट्रेस भी नहीं आएगा, मजा आएगा, सपोर्ट सिस्टम रहेगा और ऑथेंटिक भी रहोगे. आपको फेक करने की जरूरत नहीं है. एक होता है ना, फेक इट टिल यू मेक इट. आप करते जाओगे, आपके अंदर वो ऑथेंटिसिटी अपने आप आ जाएगी. How will you feel if you are able to do this? ठीक है? Now you will feel amazing, right? Type A in the chat box if you feel कि हाँ ये तो बहुत मजा आ जाएगा, बढ़िया लगेगा ये. Correct? Super. So एक और बहुत बड़ा चैलेंज, टेक्नोलॉजी. अब लाइट कैसे करें, ट्राइपॉड कहाँ से सेटअप करें, फोन में कौन कौन सी सेटिंग्स चेंज करें, कौन कौन से टूल्स यूज करें, एडिटिंग नहीं आती है. कितने लोगों का ये चैलेंज है? टाइप आई इन द चैट बॉक्स. यू फील ओवरवेल्म्ड जब आपको कंटेंट क्रिएट करना होता है, सबटाइटल्स नहीं समझ में आते. अरे ये कैसे कैसे होगा, ये सबटाइटल अपने आप कैसे होगा, मैं खुद कैसे टाइप करूंगा या करूंगी, वट एवर इट इज. सो
you feel overwhelmed by the idea of creating consistent video content. So for this you can simply do content calendar exercise हम लोग करेंगे, जहां पे आपको सिर्फ अपना एक वीडियो एक हफ्ते का बनाना है, 5 मिनट का हो 10 मिनट का हो, सिंपल कंटेंट शेड्यूल दैट वर्क फॉर योर बिजी शेड्यूल, अगर आप ये यूज कर सकते हो. नेक्स्ट, continuing to the same thing, I fear technology will fail me and make me look unprofessional because you are having a challenge of feeling कि भाई रिंग लाइट नहीं है. कई बार होता है कि डिम लाइट होती है प्रॉपर, ये यू डू नॉट हैव द गैजेट्स, लाइट नहीं है, लाइट कम लग रही है, मैं थोड़ा सा डार्क लग रहा हूँ, मुझे थोड़ी सी लाइट और बेटर करनी है. कई बार होता है कि आपके पास प्रोफेशनल टूल्स नहीं होते, ट्राइपॉड नहीं होता, आपके पास एडिटिंग स्किल्स नहीं होते. हाउ अबाउट learning to create videos professionally and with and making sure कि you are in a relaxed state of mind. You will be learning different kind of editing tools. You will be able to do it on your own. How many of you want to be अपने आप खुद करना है, आत्मनिर्भर? You do not have to wait for somebody to do, but you will be able to do it. Simple, बहुत simple techniques हैं. कितने लोग सीखना चाहेंगे इस पर्टिकुलर चीज को? And it is not even time taking. सबसे बड़ी बात ये है. You know what? I happen to know that LinkedIn has got reels and stuff like that. So yesterday I, मैंने पूरा एक महीने का जो वीडियो कंटेंट है पूरा स्केड्यूल कर दिया, पूरा 1 month, बड़े आराम से. कितना टाइम लगा? 5 मिनट 10 मिनट. कैसे कर पाई मैं? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 3 चीजें मैंने ऑलरेडी क्रिएट की थी. अब हम लोग इसको साथ में भी कर सकते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू डू इट टुगेदर? टाइप मी इन द चैट बॉक्स. बोलो हाँ. यस, ग्रेट. सो ये चीजें जो एक बेसिक चीजें होती हैं, इस पर्टिकुलर चीज से अगर आपका काम आसान हो जाता है तो व्हाई नॉट. ठीक है. नाउ हाउ मेनी ऑफ यू feel कि हाँ, people leave the webinars, people leave workshops feeling inspired but lack the structured support to maintain the momentum. कई बार होता है कि वो नहीं हो पाता, structured support नहीं मिल पाता. How many of you feel कि हाँ, आपके workshops में आते हैं लेकिन वो engagement नहीं हो पाती, वो momentum थोड़ा सा कहीं ना कहीं break हो जाता है? How many of you relate with this? कि आप कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, लेकिन वो disconnection हो जाता है. वो इस वजह से भी होता है क्योंकि कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है. देयर आर सर्टेन रेजिस्टेंस. वेयर इज द स्क्रीन? ओके, शेयर द स्क्रीन. जस्ट गिव मी अ मोमेंट. वेट. ओके, ग्रेट. यू आर एबल टू सी द स्क्रीन राइट नाउ. What if you could consistently show up on camera with confidence? Now let me ask you a question. Are you able to see the screen? No issues. Okay, yes, here. Technology, but that's okay, happens. What if is present? Perfect. What if you could consistently show up on camera with confidence, grow your personal brand, and attract high-paying clients? How will you feel? Will it be amazing? Type A in the chat box. Everybody is able to see the screen now? Sorry, screen देख पा रहे हैं? अगर आप ये देखो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़िया हो जाता है कैमरा के सामने, बड़े आराम से आप चीजें बोल पाते हो, तो आप ये सोचो कि आप ट्रस्ट, सबसे बड़ी बात ये कि ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, है ना? कितना अमेजिंग हो जाएगा, है ना? नाउ हाउ मेनी ऑफ यू अग्री दैट वीडियो स्किल्स इज नॉट एन ऑप्शन? How many of you agree that video skills is not an option, but it is a necessity for your business to scale your business, to have more clients, to get more opportunities, to create a personal brand and to create your visibility? सबसे बड़ी ये चीज है कि आपकी visibility होना बहुत जरूरी है. It is not an option anymore. It's a necessity now. Yes, type yes in the chat box. Okay. How about others?
I can see Sanha is saying yes. जो दिखता है वही बिकता है. Correct. जो दिखता है वही बिकता है. ब्रांडिंग में यही चीज है. ब्रांडिंग में यही चीज है. अगर डेयरी मिल्क अपनी एड्स कम करना शुरू कर दे तो दूसरे ब्रांड जो है वो आ जाएंगे. एवरी सिंगल टाइम दे हैव टू शो अप, शो अप, शो अप. अगर आप सोचो, अगर मैं लाइफ कोच हूँ और मैं सोचूं कि भाई ठीक है मेरे पास अपने आप लोग आ जाएंगे, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, तो लोग आएंगे नहीं आएंगे. यू हैव टू अप्रोच. अप्रोच करने के अलग अलग तरीके होते हैं. या तो आप टेक्स्ट के थ्रू करते हो या वीडियोस के थ्रू करते हो. लेकिन आप ये भी बात मानते हो कि वीडियोस इज समथिंग विच इज नॉट एन ऑप्शन. अब तो मुझे खुद ही करना होगा. अब इसमें दो केसेस हैं. आप किसी को बोल सकते हो कि वो करे, लेकिन इसमें आपका पर्सनल ब्रांड नहीं बनेगा. अगर आपको अपना बनाना है तो आपको सामने आना पड़ेगा. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? टाइप यस इन द चैट बॉक्स. करेक्ट. सो it is something that is necessity for your business. Here is one thing. How many of you understood that video making skills, when it is put together with the right guidance, can help you to unleash the power within you? अगर आपको एक सही गाइडेंस मिल जाती है, एक होता है अपने हिसाब से कर लो, एक होता है कि हाँ प्रॉपर गाइडेंस जहाँ पे आपको फीडबैक मिल रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ मैं यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हो, आप ये हुक डाल सकते हो, इससे और एंगेजिंग होगा, ये आप इस तरीके से कर सकते हो. और करते करते आपने एड्स भी बना लिए, अपने खुद के प्रोग्राम्स भी कर लिए. कितना पावरफुल चीज होगा. टाइप यस इन द चैट बॉक्स. How many of you understood that when you put together this in your career, like you're a coach, consultant, business owner, professional, entrepreneur, you will get high success in terms of money, fame, whatever you want. How many of you feel कि हाँ ये तो बात सही है, बात तो सही है, ठीक है? How many of you understood that you need someone trustable to guide you on camera confidence and use the strategy so that you get a result as soon as possible? Something, it's like, you know, you need to have results. अगर आपको results मिल रहे हैं then it's like great. तो आपको ऐसा लग रहा है कि you need someone who is trustable, जो आपको guide कर सके कैमरा कॉन्फिडेंस में, जिसने ऑलरेडी किया हो, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस हो, जो मेरे को और हेल्प कर सकता है so that मुझे रिजल्ट आए. yes or yes? How many of you understood that you are losing lakhs of money every year if you are not commanding on these skills? अगर इन skills के ऊपर आपने कमांड नहीं पाई, एक होता है राइटिंग स्किल्स बहुत बढ़िया है, एक होता है क्रिएटिंग पोस्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर आपने वीडियो स्किल्स नहीं किए तो कहीं ना कहीं आपका एक ब्रांड जो है नहीं बन पाएगा एंड यू आर लूजिंग लैक्स ऑफ मनी. टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर नॉट कमांडिंग ऑन दी स्किल्स. या how many of you understood that video and confidence skills is the need of the hour in order to build your personal brand, increase your visibility and build trust among your audience? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ट्रस्ट. अगर आपकी ऑडियंस आप पे ट्रस्ट नहीं करती, आप कहीं दिख नहीं रहे हो, आपके बारे में कहीं कुछ है नहीं, तो वो आपके पास क्यों आएगी? ये बताओ आप. Why will it come to you? It can pick any kind of niche. If that person doesn't trust you, अगर आपका उन्होंने चीजें नहीं देखी हैं, मैं बस ऐसी रैंडमली चलेगी, तो वो एक ट्रस्ट फैक्टर आता है. So do you agree that it is the need of the hour? Type yes in the chat box. Increase your visibility and build trust among your audience. Because see, how many of you understood that these skills are not optional things? You need to master camera confidence. You need to master confidence to survive your business and thereby thrive in life. Survive करेंगे तभी thrive करेंगे. ऐसे थोड़ी thrive कर सकते हैं. Correct? Type yes in the chat box if you have understood, if you are able to relate with what I'm saying. Beautiful, beautiful. Lastly, if you do not master this, you end up losing money in your business. You end up losing opportunities. You end up having no visibility. People don't know you. If you do not master this, how many of you realize it? Type R in the chat box. How about others? I can see R from Ashok ji. How about others? Priya, Sanha, Jitendra, everybody, Tapas, Rachna, Kunal, the Soul Radiance, everybody. Are you able to relate? है ना? अगर आप ये चीज नहीं करो तो कहीं ना कहीं आपका ही लॉस है. Alright. Do I have permission to take you through this in 15 minutes? I have got something
very important to share with all of you. And after this, I will share 3 AI tools that will help you to create content creation. मतलब content creation में AI tools आपको बहुत help करेंगे. Do you have your permission? Type yes in the chat box, please. Thank you. So how many of you, first of all, how many of you are feeling 10x power after doing this exercises? अभी तक जो भी हमने इस वर्कशॉप में सारी चीजें करी है साथ में, how many of you are feeling 10x power जब आपने ब्रीदिंग एक्सरसाइज किया, आई एम कॉन्फिडेंट कहा, आपने वीडियो क्रिएट किया? डिड यू एक्सपेक्ट कि हम वीडियो क्रिएट करने वाले हैं इस वर्कशॉप में, खुद से बनाने वाले हैं? कहीं आपको ऐसा लगा था? नहीं लगा था. आपको ऐसा लगा था चलो ठीक है, वी लर्न समथिंग एंड देन ओके थैंक यू. बट आपने वो खुद एक्शन लिया, आपने उस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया. दैट इज क्रेजी, दैट इज अमेजिंग, दैट इज माइंड ब्लोइंग, ब्यूटिफुल. So you already are feeling 10x power. Type 10x in the chat box. Yes. Type 10x in the chat box. Crazy. Instant implementation. Crazy, beautiful. So here is one thing that I want to share with each one of you. This is Camera Confidence Blueprint. अब क्या होता है कि बहुत सारी चीज Okay. Can you hear my voice? Hello, mic check. Can you hear my voice? Great, thank you. So here is something that is called Camera Confidence Blueprint. Because ये चीज अगर आपने कर ली तो आपका जो वीडियोस है, आपका जो एक पर्सनल ब्रांडिंग है, ये सारी चीजें बड़े आराम से हो जाएंगी. इसी तरीके से आप कॉन्फिडेंटली अपने खुद के वर्कशॉप्स ले पाओगे, जैसे मैं कर रही हूँ, खुद के वेबिनार्स ले पा रही हूँ. Because see, using this blueprint, you can make lakhs of money in your workshops. Besides that, build your personal brand and create an impact. How many of you want to create an impact? Type I in the chat box. How many of you want to create your personal brand? Type I in the chat box. How many of you also want to generate money through your workshops, through your webinars, through your training programs? Type I in the chat box. Business grow करना है ना? Yes. So here is one thing. बहुत सारी चीजें मैं आपको एक साथ में नहीं सिखा सकती, but here are 7 things that we can do it together. First and foremost thing is, सबसे बड़ा चैलेंज जो है कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस का एक इशू है. वीडियो क्रिएशन में कॉन्फिडेंस का एक इशू है, जहां पे आपको लगता है कि थोड़ा सा there is some kind of limiting belief. So low on confidence. Next challenge is कि you do not know how to start workshops, किस तरीके से करें, कहाँ से ऑडियंस लेकर आए. There is some kind of fear of communication. There are some kind of self doubts. थोड़े बहुत हैं, थोड़े बहुत नहीं भी हैं. Consciousness हो जाती है. Now here is something. Watch. You want to build a personal brand. Number 1. You want more opportunities? Type yes. This is something that you want. You want more recognition. हर इंसान को चाहिए अपनी खुद की आइडेंटिटी, खुद का recognition, opportunities, business grow करना है. You want money, wealth, and also at the same time you want clients. Clients तो सभी को चाहिए, correct? Now, foundation is something that every फाउंडेशन एक ऐसी चीज होती है जो हर जगह इंपॉर्टेंट होती है. अगर आपका घर का फाउंडेशन सॉलिड नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो घर टिकेगा नहीं टिकेगा. बट लेट मी टेल यू समथिंग. This is the 7th step. Mind block, consistent engagement, MMF framework, authenticity, tech, and AI. Here is something that I want to congratulate each one of you, because you have already, you have already done the first step. आपने फाउंडेशन ऑलरेडी किया है. आपने खुद से अपना एक वीडियो क्रिएट किया, आपने एफर्मेशन किया, आपने ब्रीदिंग टेक्निक किया है, और आपने उसको वीडियो को ऑलरेडी ग्रुप में शेयर किया है. So this is something that is a great achievement. Congratulations each one of you. Please clap for yourself. Clap for yourself. This is something that you have achieved already. आपने अपना फाउंडेशन बहुत बढ़िया बना लिया है उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके. How many of you feel empowered? Mind blowing. Yes, I have done something. मैंने सिर्फ सुना नहीं है, हाँ मैंने engagement किया है, मैंने सारी चीजों को connect किया है, सारी चीजें. Yes, type yes in the chat box.
Fantastic. I'm so proud of you, everyone. You guys are amazing and I love the audience, by the way. बहुत ही beautiful audience है. मुझे बहुत मजा आ रहा है session लेने में. Now, here are other pointers as well. Number one is mind block, consistent engagement. ये सारे steps हैं जो एक एक करके basically 7 steps हैं. MMF, that is message map framework, जहाँ पे आप hooks की बात करते हो. मैसेज क्लियरली होना चाहिए, कॉल टू एक्शन आना चाहिए, ऑथेंटिसिटी है, टेक्नोलॉजी है, एआई है, ये सारी चीजें हैं. ओके, सो नाउ ये सारी चीजें, हाउ मेनी ऑफ यू वुड रियली वांट टू डू इट विथ मी? टाइप आई इन द चैट बॉक्स, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर ओनली 5 people. ठीक है, आई एम लुकिंग फॉर ओनली 5 people who are committed to take action and build video systems. Videos आप create करें, who want to build confidence on camera and want to, have this impactful personal brand that helps them to consistently do workshops, do webinars, generate high ticket clients, have leads. आपको पता है आपको videos के through leads भी मिल सकती हैं and have sales also in the next 7 days. So I am looking for only 5 people who are committed to do this. How many of you are excited? Type E in the chat box. How many of you want to do? Okay. Sanha, Ashok, how many of you want to do? Kunal. Okay. Consistently for 7 days, and then obviously you will get a proper roadmap in terms of how you can scale it. So 5 people who are committed to take action and build video systems, confidence on camera, impactful personal brand that helps actually you. आप ही को help करेगा to consistently do workshops, webinars, generate high ticket clients, lead sales in the next 7 days. So here is what I want you to check out. Okay? Type a big yes in the chat box if you want to do. Type a big yes. Type yes in the chat box if you want to do. Yes, fantastic. Type a big yes. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. So I'm going to introduce you to the ultimate confidence on camera 7 days powerful challenge. What is the 7 days powerful challenge? Day 1 will be identifying your why. ठीक है, मैं आपको एक पूरा प्रॉपर ब्रेकअप दे रही हूँ कि हम कौन से दिन को क्या एक्टिविटी करेंगे. ठीक है. Day 1, identifying your why, breaking through camera fear and limiting beliefs. I'll be sharing you a secret technique that will help you to break the pattern interrupt technique. बहुत powerful है, जिसको आप instantly करोगे और उसी के साथ साथ practical activity होगी और वो बहुत intensive होगी. It will be result oriented and action based. No day, there will be not a single day जहाँ पे आप सिर्फ सुन रहे हो, आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो, आप चीजें कर रहे हो मेरे साथ में और आप एक रोज आप एक प्रोग्रेस देख पा रहे हो. ऑन डे 2 यू विल बी लर्निंग टू बिल्ड कॉन्फिडेंस विद बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस. सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत इफेक्टिव चीज है. लर्न हाउ योर बॉडी लैंग्वेज एंड वॉइस इन्फ्लुएंस ऑन कैमरा प्रेजेंस एंड हाउ टू यूज देम टू एक्सूड कॉन्फिडेंस. सीक्रेट टेक्निक, पावर पोजिंग, voice control exercise and practical activity. These are the things that we are going to experience together on day 2, right? On day 3, you will learn how to master camera presence. Mastering on camera presence, you will learn how to develop a magnetic on camera presence that connects with the audience and conveys authenticity. And hereby again डूइंग अ प्रैक्टिकल एक्टिविटी. मतलब साथ में रोज कुछ ना कुछ एक्टिविटी होगी. जब एक्टिविटी होगी, चीजें आप खुद करोगे तो आप खुद एसेस कर पाओगे, उसका एक ट्रैकर रहेगा. एवरीथिंग विल हैव अ ट्रैकर. ऑन डे 4 इज ऑल अबाउट इम्पैक्ट. मास्टर स्ट्रक्चरिंग एंड डिलीवरिंग अ क्लियर impactful message that engages your audience. You will learn secret technique, that is message map framework, जो मैंने आपसे शेयर किया. Outline your message in 3 steps. Headline, key points and call to action. किस तरीके से आप उसको और impactful बना सकते हो, and secret tool to engage with the audience.
Also, you will be getting bonuses. आपको bonuses बहुत सारे मिलेंगे. जैसे for example, you will be getting 50 hooks to make content. सिंपल आपके सामने हुक्स होंगे, आप इस पर्टिकुलर लाइन से आप वीडियो स्टार्ट करो, उसके बाद आप कन्वे करना शुरू करो. हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू हैव free 50 hooks to make content? Type me in the chat box. Type me in the chat box. Big me in the chat box. Beautiful, phenomenal, crazy, wonderful. What is the next thing that we are going to do on day 5? Learn how to let go of perfectionism and deal with the fear of judgment and embrace authenticity on camera. You'll be able to conquer perfectionism and fear of judgment. Learn the secret technique of reframe and release. ठीक है, reframe and release करके एक टेक्निक होती है जो हम बेसिकली परफेक्शनिज्म को इराडिकेट करने के लिए करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कैमरा के सामने ऑथेंटिसिटी क्रिएट करना. प्रैक्टिकल एक्टिविटी ऑफ डूइंग एंड एडिटिंग. हाउ मेनी ऑफ यू फील कि हाँ वीडियोस एडिट करने में चैलेंज आता है, मुझे ये भी करना है कि हाँ आई शुड बी एबल टू डू इट ऑन माई ओन, मतलब मैंने बनाया, खुद से एडिट किया और अपलोड कर दिया. We'll also be learning different kind of editing techniques. Very simple, in a very simplified manner. ठीक है? On day 6, did I miss day 6? No. Becoming consistent and overcoming resistance. Crazy, yeah? How to build a sustainable routine for creating consistent video content without feeling overwhelmed or burnt out. You learn the secret technique to overcome resistance. You will learn how to create videos for efficiency with specific topics and goals. How will you feel अगर आपके पास में सारी चीजें structured way में हो, ये मेरे goals हैं, ये मेरे topics हैं, इस हफ्ते मुझे इस पे बनाना है, ये करना है, ये करना है, बहुत proper precision के साथ एक schedule हो. How will you feel? Will you feel amazing? Type yes in the chat box. Yeah? Crazy. Beautiful. Let me share what we are going to experience on day 7. Presenting with power and selling your message. Your message. On day 7, you will learn how to confidently present yourself as a speaker, deliver engaging talks on camera, and use your video content to attract clients or grow your influence. सबसे important चीज है, client सबको चाहिए, influence सबको create करना है, personal brand सबको बनाना है. I'll be sharing you the secret technique which I call peak state technique. And of course, we'll be doing a practical activity together. There will be a lot of sharings. How many of you feel excited and really want to be a part of this? Type me in the chat box. Type me in the chat box. Crazy, beautiful, fantastic. Now, अभी इतने में नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें आपको और भी मिलेंगी. Here is one thing. All that is worth is more than 36,000. This entire thing is worth more than 36,000. However, I'm going to share one more thing. In the beginning, I asked you this question, how many of you love gifts? And all of you had typed G in the chat box. So here is what you are going to get in the form of bonuses. You will be getting bonuses absolutely free. First bonus that you would be getting is 50 hooks to make content. This is the bonus number 1. Bonus number 2 is I will be personally watching your videos. मैं आपका एक वीडियो आपका ऑडिट करूंगी. कितना अमेजिंग होगा अगर मैं आपका वीडियो ऑडिट करूंगी. बहुत बढ़िया लगेगा. आपको एक फीडबैक मिलेगा, आपको ये समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे मैं ये इंप्रूव कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं ये चेंज कर सकता हूँ. मैं आपको थोड़े बहुत ट्वीक्स बता दूंगी और आप कर लोगे और बहुत बढ़िया लगेगा. This is the second bonus, personal audit. Third bonus is I will be sharing 10 AI tools that give content ideas. How many of you would love to get it? Bonus number 3, 10 AI tools that give you content ideas. Next is bonus number 4. You will be getting confidence affirmations in the form of text and in the form of audios, जिसको आप कभी भी सुन सकते हो और एकदम से you get into that best state और आप अपने videos बना सकते हो. This will be for life. ये जो bonuses है आपको lifelong मिलेंगे. Would you love to get these bonuses? बहुत बढ़िया है. और उसमें सिर्फ यही नहीं I am confident, बहुत सारे affirmations हैं जिनको आप कभी भी यूज कर सकते हो, कभी भी बोल सकते हो, उनको लिख सकते हो, उनको अपने माइंड में चला सकते हो, ऑडियो फॉर्म में मिलेगा ये. Next is you will be getting bonus number 5, that is
स्पीकर्स प्लेज, एंड ये न सिर्फ आपको बोनस एज अ डॉक्यूमेंट मिलेगा, बट एवरी डे वील बी डूइंग दिस प्लेज. हाउ मेनी ऑफ यू वुड लाइक टू हैव द स्पीकर्स प्लेज? Type me in the chat box. Yeah, everybody would like to have the speaker's pledge. That will make you super confident. Bonus number 6 is superpower meditation. Okay, superpower meditation you will be getting, and this will help you to rewire your subconscious mind and also help you to become even more confident. ये सारी चीजें आप मतलब उसको आप रजिस्टर कर सकते हो, रख सकते हो अपने साथ, कभी भी आप उसको यूज करो. ये मेरी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है. नेक्स्ट कम्स द बोनस नंबर 7, वीडियो हैबिट ट्रैकर. एक होता है आपका हैबिट ट्रैकर, ठीक है, एक होता है कि आपने वीडियोस बनाई, उसका आपको ट्रैकर मिलेगा. हाउ मेनी ऑफ यू वुड लव टू हैव द वीडियो हैबिट ट्रैकर? टाइप मी इन द चैट बॉक्स. आर यू एक्साइटेड टू गेट इट? टाइप बिग मी इन द चैट बॉक्स. ब्यूटिफुल, फैंटास्टिक. Okay, so these bonuses are worth more than 20,000, right? More than 20,000. मतलब एक एक चीज आपको मिल रही है, affirmations मिल रहे हैं आपको, हुक मिल रहे हैं आपको, कंटेंट क्रिएट करने के AI टूल्स भी मिल रहे हैं, क्योंकि आप मैनुअली भी करोगे और AI की हेल्प से भी करोगे तो आपको एक सपोर्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगा. प्लस मैं आपकी एक एक वीडियो पे फीडबैक दूंगी कि आप यहाँ ऐसे करिए, इस तरीके से करिए, यहाँ पे इस तरीके से बनाइए, ये टूल यूज करिए, ये करिए. मतलब एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी मिलना. This is something which is very powerful. Yes, how many of you love it? It's crazy. So the total value of this whole thing, you know, including the 7 days, that is 36,000 plus जो आपको bonuses मिल रहे हैं, that is for 20,000, is worth 56,000. How many of you want it? Type me in the chat box. Type me in the chat box if you genuinely want it, because I'm going to reveal something if you stay till the end. ठीक है, अगर आपको ये चाहिए. See, this is I've never ever done before. कभी मैंने ये चीज करी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है, you know, helping somebody to have more confidence on camera, because I struggled with it. I was quite shy, but I built the skill. मैंने अपने एक्टिंग के एक्सपीरियंस से जो चीजें सीखी है, थिएटर के एक्सपीरियंस से जो सीखी है, मतलब वो जो एक्सपीरियंस जो मुंबई में जाके मैंने जो भी शोज, जितने भी शोज किए, राइटिंग के किए, चीजें किए, उन चीजों की हेल्प से मैं फिर लाइफ कोचिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाने लग गई और अपने एड्स की वीडियोस बनाने लग गई, स्क्रिप्ट्स भी लिखने लग गई विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ रेजिस्टेंस. तो ये बहुत कमाल का होगा अगर आपको इस तरीके का फीडबैक मिलता है और इस तरीके की गाइडेंस मिलती है. So just for you and only for today, I want to make it a no-brainer for today. Only for today. Do you want me to reveal it? Type yes in the chat box. Type yes in the chat box. I want it. Crazy. So this is what it is. Here is what you're going to get. Camera confidence blueprint. For today, it's not for 56,000. For today, it is, you know, what you will be getting. You'll be getting personal audit, overcoming camera fear, discovering your strong why, creating magnetic personality, voice modulation. मेरा dubbing का जो भी experience रहा है, acting कर रहा है, video creation कर रहा है, practical activities हम करेंगे, MMF framework use करेंगे, hooks, headlines, storytelling, editing, CTA, video content creation, 50 hooks, 50 hook ideas, affirmation trackers, AI tools. अभी मैं आपको 3 AI tools और भी सिखाने वाली हूँ, ठीक है, बिफोर कंक्लूडिंग. सो ये सब कुछ आपको, यू आर गेटिंग इट फॉर 1,999. You'll be getting it for 1,999. Yeah. So 5 slots are there. The payment link has already been shared in the chat box. It's a 7-day challenge and you are getting 7 bonuses. Payment link has already been shared in the chat box. And this is the, you know, scanner if you want to, you know, it starts from 30th September. Yeah, it starts from 30th September. You'll be basically be a part of this WhatsApp community, and every single day you'll be getting कुछ आपको शेयरिंग्स मिलेंगी, फीडबैक मिलेगा. हम लोग इस चैलेंज को 30th September से स्टार्ट करेंगे एंड द टाइमिंग विल बी फ्रॉम 8 PM. ठीक है, 8 PM करेंगे. The duration will be approximately 40 to 50 minutes.
40 to 50 मिनट्स करेंगे, जहां पे हम प्रॉपर तरीके से एक एक चीज डॉक्यूमेंट करेंगे, छोटे छोटे आपको होमवर्क्स मिलेंगे, जहां पे आप खुद भी इन चीजों को ट्रैक कर सकते हो, राइट? So those timings will be, Vasudha, timings will be from 8 p.m. to 9 p.m. Sure. Timings will be from 8 p.m. to 9 p.m. Daily live, yes, 1 hour. Yeah, you can. So those people who have already paid, you can simply unmute yourself and ask. I would really like to know why you wanted to do it. Yeah. The payment link has already been shared in the chat box. Done. Kunal has already done. Kunal, can you unmute? Could you repeat the dates? Yes, the dates are 30th September. अब 30th September से लेके 7 days का आपके पास में challenge रहेगा. Plus you will be, see, सबसे ज्यादा मजा आता है लाइव सेशन करने में, ठीक है? सबसे ज्यादा मजा आता है लाइव सेशन में. Just in case you are unable to attend the live session, अगर आपसे कुछ भी miss out हो जाता है, you will be getting the recording that will be with you. Recording जो हमारी 7 days की रहेगी, that will be for the next 15 days. तो आप 15 days के स्पैन में पूरा रिकॉर्डिंग जो है देख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, आप मुझे वीडियोस भेज सकते हो, मैं उसको पर्सनली ऑडिट करूंगी, ठीक है? और लेकिन जो बोनसेस हैं वो आपके पास लाइफ लॉन्ग रहेंगे, वो मेरी तरफ से गिफ्ट है, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं दिया था, तो मैंने कहा यार मैं कुछ ऐसा चीज क्रिएट करूं. एक टाइम था व्हेन आई स्टार्टेड फंबलिंग, बहुत दिक्कतें होती थी, तो आई हैव पर्सनली गॉन थ्रू इट इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन एक्टर. मैं बहुत ऑनेस्टली ये चीज आपके साथ शेयर कर रही हूँ. तो ये चीजें मैंने बड़े दिल से क्रिएट करी हैं और मैं आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ, ठीक है? सो दोज हु हैव ऑलरेडी मेड द एनर्जी एक्सचेंज, पे ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Yeah, only 3 slots are left. Here is the payment link that has already been shared in the chat box. You will be, yes, Kiran, you will be getting the recording of the workshop, but वो 15 days के लिए होगा. Yeah, Kunal. Yeah, hi, Surbi. Thanks for giving this opportunity. I wanted this because I'm facing this thing because video creation is something which is very important. I do understand that thing, and because of that, I have been delaying this thing a lot because of all the points which you have raised during Yeah. this. और कहीं ना कहीं उसी से विजिबिलिटी कम होती है, ब्रांड कम होता है, एंड देन अल्टीमेटली द बिजनेस सफर्स. Yes, that is the, वो एक अनडिनाइबल चीज है कि आपका बिजनेस सफर करेगा इफ यू आर नॉट कमिंग ऑन कैमरा. करेक्ट, करेक्ट. So congratulations, Kunal, for taking this action, and I'll see you soon inside the community, and I'm so grateful कि आपने ये action लिया. All the best. Thank you. Welcome aboard. Great. Beautiful. Thank you so much for sharing. Longevity for the videos, recordings, अच्छा, should be for a longer time. ठीक है. अशोक जी ये कह रहे हैं. ठीक है, आप मुझे बताइए, चलिए, बिकॉज आई एम डूइंग इट फॉर दिस पर्टिकुलर कम्युनिटी. आई हैड मेंशन कि 15 days का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा. फॉर हाउ लॉन्ग यू वांट द रिकॉर्डिंग? शैल आई मेक इट द रिकॉर्डिंग फॉर 20 days, 21 days? You tell me. For 30 days. जैसे जैसे रिकॉर्डिंग होती है वैसे वैसे आपको मिल जाएगा. 60 days, that is crazy, that is crazy. 60 days तो फिर वो prolong होता जाएगा. Now, Ashok ji, you tell me, why is it that you want it for 60 days and not for 15 days or 30 days? What is that something that is, stopping you? What is the challenge? Can you please type that in the chat box? Okay, those who have already done, please type done in the chat box. जिन्होंने already कर लिया है, please type done in the chat box and let me check. Yeah, the payment link has already been shared in the chat box. Okay.
Okay, I can see Sam Kumar and Ashok ji. Okay, great. Ashok ji and Sam Kumar. Sam Kumar. Wait. Sam, is it Sanha? Have you done? Kunal, don't worry. We'll connect. Sanha? Sam Kumar. Okay, Sam, where are you? Okay. Yeah, can you hear me? Yes, Sam, can you please turn on your Okay. video? Yeah, it was a great presentation. Thanks a lot. And I think the video was a problem for me most of the time. Mm-hmm. And Okay. even though I have the content, I know I have the confidence, but when it faces the camera, it's always a problem, and I make a lot of mistakes in recording it. Okay. So that's why I attended this class, and I think you did a powerful impression that I can get rid of that shyness and or mistakes. Absolutely. Would love to see you on camera if you can turn on your video. Right now I'm outside, so it's not easy to Okay. be that. But I think I'm definitely on the class. I'll be there on camera. Great, great. Congratulations. And whatever challenge you are facing, Sam, whatever challenge Kunal you are facing, this will be, आप आराम से इसको overcome कर सकते हो. Don't worry at all. ठीक है. Congratulations. Welcome aboard for this beautiful community. Thank you so much for joining in. Okay, I can see wanted to live, but late evening time is challenging as I'm occupied with other things currently. Sanha, actually, इसको हम लोग शाम को ही करें. We are doing it in the evening because it is something that you are doing this activity, so it is getting into your subconscious mind. So that is the reason why we are doing it in the evening. So you can get the recordings. That will be perfect. And okay, Ashok ji has said that I am on many courses and the content I am consuming is fast. No worries, यहाँ पे हम साथ में करेंगे. यहाँ पे साथ में आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा और ऐसा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा. मैं आपको सच बताऊं, मैं एक 21 डेज प्रोग्राम करती हूँ, मैजिकल माइंडफुल एक्सीलेंस प्रोग्राम. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एंड ओवर देयर ऑल्सो सेशन होने के बाद भी पूरे दिन मेरे एक्शन प्लान्स रहते हैं, रिमाइंडर्स रहते हैं कि ये करना है, ये करना है. एंड एवरीबडी इज एक्सट्रीमली वेरी पार्टिसिपेटिव. तो इस पर्टिकुलर चीज में पढ़ने से ज्यादा करना रिजल्ट देगा. If you do it, then you will see the difference. How many of you agree? The timings are clashing. No worries. आप recordings देखिए. I will do one-to-one with you. I will do one-to-one with you. No issues. अगर timings का दिक्कत है, तो I will do one-to-one with you. Sanha, अगर timings का दिक्कत है, and if you have joined, I will do one-to-one with you. That is my commitment. मतलब मैंने अपने आई यूज्ड टू डू वन टू वन विद फेंग शुई एक्सपर्ट. मैंने उनके वीडियोस बनवाए थे, उनको काफी ज्यादा चैलेंजेस हो रहे थे, तो उनके वीडियोस बनाए उनके साथ. एक्चुअली वी हैपन टू मीट इन मुंबई ऑल्सो, तो जूम पे भी मिले हम लोग. मुंबई में गए and I literally asked her. So we were sitting in Starbucks and she started making it. She edited also and she was like, oh my god, this is crazy. So ये मैंने किया था. I did one-to-one with Dr. Alka also. She's based in Mumbai again. So we used to come on Zoom calls. जो भी उनको वीडियो के challenges होते थे, carousel बनाना होता था, we used to do that. And बहुत मजा आता था. Day time में आपके साथ one-to-one हो जाएगा. No issues, Sanha. But have you registered for it? That is something which is very important. Those who have done, type D in the chat box. I can see Kunal has done, Sam has done, and Ashok ji has already done. So those who have done, type D in the chat box. अगर आप ये करते हो और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि टाइमिंग्स का इशू है, तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी. रिकॉर्डिंग्स के साथ साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यू नीड पर्सनल गाइडेंस, तो आई विल डू one-to-one विद यू. नो इश्यूज. जहां पे भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, ओके.
Ashok ji, you have done. Can you please unmute and tell me why you registered for it? And I can also say one thing, you were very participative, agreeing with all the points. Can you please unmute? Yeah. Why you have registered for it? Can you please tell that? See, I do around 3 to 4 posts a week, and those are mostly texture. So and I understand that these days LinkedIn is promoting video content around 3 to 4 times more than otherwise, Absolutely. So I said I will have to get into it, and I mean I'll have to learn. I'll have to learn, and I'll have to get into it. And unfortunately, you came up with this particular offer. So I mean, I'm thankful to you. I'm thankful to Raj to have thought of this particular course, and I believe it's going to help me a lot. Sure, it will definitely help. And I'm like, I must say that Raj has been truly, he has done such a great contribution in terms of changing your LinkedIn game, in terms of changing your business game altogether. And he is a person who always wants to contribute and give best. He loves to educate, he loves to inspire. So this is something that I also love, and I'm so grateful that you joined this community. Let us do it together and let us crush those limiting beliefs, and let us become more confident and start creating videos and build a personal brand. Thank you so much, Ashok ji. Welcome aboard. Thank you. Beautiful. Great. Anybody else who has already registered, please type done in the chat box so that I can, unmute you. What inspired you? Sanha. Beautiful. Sanha, what inspired you to take up this? Please unmute yourself and yeah. Hi, Surbi. First of all, thank you for the lovely session. It's been you're very inspiring and charismatic speaker. Thank you so much. And for me, is like I have been like Ashok ji said, right? The static and other content parts. Video is something I've been thinking to do. It's only in thinking most of the times. So Right. that is the reason. Since the span of it, of the sessions also 7 days. So I wanted to, making it live only makes sense because it again ends up, if you see the recordings, timing was the constant. So finally I joined because it's going to be daytime. I'm ready for that. So I want to push myself basically. So you came Sure. at the right time. I wanted to do, coming days, but now since you have come, so it will be on fast track. Great, great. Yeah, I'm thank you. so happy that you took the action and you took the leap of faith and decided to come in. And I promise you that you'll be getting the recordings. Definitely, you'll be getting the recordings, and I'll sit with you on one-to-one, and I will understand कि कहाँ challenge आ रहा है, कहाँ road block है, कैसे उस चीज को हम लोग scale कर सकते हैं, master कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बना सकते हैं, आपका पूरा video game change कर सकते हैं. Because I really Yeah, enjoy doing it. even I have delivered my TEDx speak, but a TEDx Wow. talk basically, yeah, 2 years back. But I Great. don't know, video mein that consistency is not there basically. You said right, when you held it back, wo hota nahi hai wo cheez. So that's what happening with me. So that is the reason I want to take instant action, and I'm working towards with your guidance. Thank you so much. Beautiful. Thank you so much for joining in. Welcome aboard. And please give a big round of applause for Sanha. You can see we have a TEDx speaker right in our audience. We have one more TEDx speaker. Congratulations. Thank you so much for being a part of it. Ashok ji, Sanha, Sam, Kunal. I can't wait to, connect with you, right? I mean, I'm super excited and congratulations, because one thing is very, very important. No matter you are doing your content creation in terms of text, etc., but when it comes to videos, speaking एक चीज होती है और वीडियो क्रिएशन एक चीज होती है, और वीडियो पे किस तरीके से बोलना, कनेक्ट करना, एंगेज करना, वो एक डिफरेंट चीज होती है. दैट इज समथिंग टोटली डिफरेंट. एंड उस पर्टिकुलर चीज को कंसिस्टेंटली करना विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट बर्निंग आउट. मतलब मुझे ये चीज इतनी पसंद है, जरूरी नहीं है कि हर किसी को पसंद हो. इफ समबडी इज आस्किंग मी कि हाँ ये क्रिएट वीडियो बनाना है, इस तरीके से करना है, in the middle of the night I'll take my phone, थोड़ा बहुत ready होके I'll record it. I love it. मुझे पसंद है क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरे काम के लिए कितना important है.
मैंने ये चीज कंसिस्टेंटली करी, तब जाके मेरे को एक TEDx टॉक का ईमेल आया, कॉल आया. आई वाज नॉट एबल टू बिलीव कि हाँ ये चीज हुई है. तब जाके मेरे को सेकंड TEDx टॉक के लिए इंस्टाग्राम पे DM आया. आई वाज लाइक दिस इज, ये शायद रियल नहीं है, ये शायद कुछ ऐसी है. एंड आई वाज लाइक please send me an email. I officially got that email and then I was like, okay, fine. So, and also, you know, when it comes to giving auditions, कहाँ rejections हुए हैं, कहाँ किस तरीके से introduction देना है, कैसे क्या सारी चीजें, वो सारा जो भी मेरा experience है, मैं आप सबके साथ दिल से share करूँगी. मजा आने वाला है. Everybody who has joined it, thank you so much for joining in. If there is anyone else who has who still wants to be a part of it, you can just go on the link. Raj ने already share किया है in the chat box, and please go ahead and share that you have already done it. Just give me a moment. Okay, great. So as I promised, most welcome. As I promised कि आपको bonuses भी मिलेंगे जिन्होंने already register कर लिया है इस camera confidence blueprint के लिए. Here is one thing that I want to share with all of you. 3 AI tools जो मैंने starting में बोला था, जो आपके वीडियो के content creation के game को बहुत powerful बना सकते हैं. मैं खुद personally use करती हूँ जब मुझे लगता है कि यार ये तो मुझे use करना पड़ेगा. Number 1, automatic subtitles के लिए Veed.io. It's one of the greatest tools. If you have never heard before, लिख लो उसको. I'll just share the name. हाँ, राज ने, thank you राज. राज ने already share कर दिया है. Veed.io. आप उस पे जाएंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, उसमें सबटाइटल्स चूज करेंगे, अपने आप वो सबटाइटल्स कर देता है. थोड़ा बहुत आपका एडिट करना पड़ेगा. It simplifies your game. Number 2 is InShot. InShot एप्लीकेशन में आप अलग अलग इफेक्ट्स यूज कर सकते हो, सबटाइटल्स डाल सकते हो, जहां पे आपको एम्फसाइज करना है, म्यूजिक ऐड करना है. कई बार होता है इंस्टाग्राम जो है ट्रेंडिंग म्यूजिक को एकदम से ऑडियो अनअवेलेबल कर देता है, तो आप InShot पे अपना खुद का म्यूजिक भी क्रिएट कर सकते हो एंड यू कैन क्रिएट योर वीडियोस. बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से ये चीज हो सकती है. नेक्स्ट इज कंटेंट कहाँ से निकालेंगे. सो दिस इज समथिंग which I discovered and everybody knows it, but इसको आपको वीडियो क्रिएशन में थोड़ा सा ट्वीक करके करना होगा. that is ChatGPT. ChatGPT को आपको अगर इस तरीके से इंस्ट्रक्शन देनी है कि imagine yourself that you are the one of the greatest content creator and I want to tell me 10 prompts that helps this particular thing in the age group of being in the age group. आपको mention करना है, ये prompt देना है clearly and which is result oriented and has a CTA. इस टाइप का आपने prompt उसको दे दिया. Basically जो language आप communicate करोगे वो उसी तरीके से उस चीज को absorb करेगा. It will give you the content in a tabular format. So use these tools wisely and change your content creation game massively. जितना wise करोगे जितना wisely आप इन चीजों को use करोगे उतना massive impact आप create कर पाओगे. Just give me a second. This document. Okay, just give me a second. All right. I'm also going to share, which is the bonus for each one of you, as it was promised in the WhatsApp group. I'm going to share 100 plus content ideas in the Fearless Content Toolkit. ये मैंने आपसे कहा था, ये promise था. So I'm going to share the document in the chat box. Thank you, Jitendra. Good to see you. I saw you in the event. I remember, if I'm not wrong. I think you were there in the event. Great. So आपके सामने आपको ये जो है link share कर दिया गया है. That is the bonus for today. For all those who are here and you have attended, thank you so much for joining in. बढ़िया से आप इन bonuses को use करिए और एक slot अभी भी remaining है हमारे पास में, ठीक है? In case you want to,
be a part of the Camera Confidence Blueprint, you can join. So if you want me to repeat anything, I can share what all bonuses you will be getting, what are the topics that will be shared in the, day wise आपको कौन-कौन सी चीजें share की जाएंगी. अगर ये चीजें clear हैं and you have any question, कोई भी question है, I'm open for question answers. If there is any question that you want to ask regarding the entire 7 days challenge, you can raise your hand, you can just type that question in the chat box. आप कुछ भी कर सकते हैं, बताइए कुछ भी आपका question है तो. हाँ, इस वर्कशॉप में भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है जो आपको इस वर्कशॉप में नहीं समझ में आया, यू कैन आस्क दैट एज वेल. If there is any question, so I think there is no question, nobody wants to ask any question. बढ़िया से सब समझ में आ गया. You can unmute. एक second. You can unmute yourself if you want to ask any question. आपका कोई भी सवाल होगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा. अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है. Any questions regarding? Okay. So I'll repeat, we are going to have the 7 days challenge starting from 30th September, timings 8 PM to 9 PM. Mostly करेंगे 40-50 minutes का. और उसके साथ साथ हम energy based exercise करेंगे. We'll start with a powerful energy, and what all bonuses you'll be getting these bonuses for lifetime. 50 hooks to make content. Personal audit मैं आप सबका करूंगी. 10 AI tools that give you content ideas. Confidence affirmations आपको मिलेंगी. Written document में sound आपको audio भी मिलेगा. उसको मैं personally record करूंगी एक specific vibration से, जिसको आप सुनते ही अंदर से आपको vibration feel होगी. Speakers pledge आपको मिलेगा. Every day we'll do speakers pledge together, and you will be getting that speakers pledge. कभी भी ऐसा हो speaker pledge उठाया, सामने रखा अपने vision board के सामने, उसको पढ़ा और वीडियो बनाना शुरू कर दिया. It's something that is magical. You'll be also be getting superpower meditation, and you'll be getting video habit tracker. And there's one more bonus of revision sessions on weekends. ठीक है? जितने भी आपके sessions हुए हैं, आपके सारे sessions की revision भी होगी. Any question you want to ask? I think there is no question. All right. Thank you, Kunal. It has been super powerful. How many of you really enjoyed? Type that. Yeah, I really enjoyed the session. कुछ सीखने को मिला, मजा आया, बहुत पावरफुल था. कुछ आपने कुछ उससे जो है आपको कुछ ब्रेक थ्रूज हुए, एक्सपीरियंस हुए, कुछ भी है आप वीडियो ऑन करके शेयर कर सकते हैं. You can turn on your videos and share that, or you can simply type that in the chat box. Thank you, Kunal. Anybody else? Yes, enjoyed. Thank you for the lovely session. So thank you so much, Sanha. I'll be Sanha, आपका since timing का issue है, so you'll be getting the recording. We'll be having the session in the evening, but I'll do a personal audit with you in the morning. Don't worry. Ashok ji, thank you so much. Thank you so much for your compliment. All right. So shall we conclude? Shall we conclude? Okay, take a deep breath. Inhale, exhale. Inhale confidence, exhale fear. All right, just tap on your collarbones and say this to yourself. This is a free exercise. This is an EFT technique that I share in my 21 days program. जाते जाते मैं आपको लेके जा रही हूँ. It's called emotional freedom technique. ये बोलना है, I am confident. Just tap.
टैपिंग रियली हेल्प्स, जो आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं उसको रिलीज करने में बहुत हेल्प करता है. I am confident, I am confident, I am confident, I am confident. नहीं हो पा रहा है, I'm learning to be confident, I'm learning to be confident. जो माइंड आपकी लैंग्वेज को धीरे 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 जो चीज उसको समझाओगे वो वैसे ही समझेगा. That's how your subconscious mind is wired, my dear. Thank you so much, everyone. We still have one more slot, right? We still have one more slot. In case you want to join, you can do it. Best, namaskaram. Thank you so much for being a part. And I totally love this audience क्योंकि आपने actions लिए हैं, videos बनाए हैं, मेरे साथ आपने I'm confident बोला है और ये खुद के लिए किया है. This is something that you have done for yourself. It's crazy. Thank you, Kunal. Thank you, Priya. Thank you, Kamlesh. Thank you, K. Janu. Thank you, Anil. Thank you, Samrat. Thank you, Raj. Thank you, Dr. Nafis. Thank you, Sam. Thank you, Management Services LLP. Thank you so much. Thank you, I'll see you Surabhi. soon. Okay. Bye-bye. God bless you. Take care. Namaskaram. Thank you. Hello everyone.